कौन हो भाई? बताओ स्टार्ट कब कर रहे? बस कर दिया मैंने। हे हाय हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोग यहाँ पे आ गए तो न्यू हाईलाइट देखना बिल्कुल मत भूलना। मैंने पिन कर दिया है कमेंट में, और लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। चश्मा वश्मा लगा के बैठ जाता हूँ, और करीबन एक वीक बाद मैं आया हूँ। आई ट्राई टू बी वेरी रेगुलर नाउ ऑनवर्ड्स। लेट्स सी। मेरे साथ बैठे हैं डोमिनिक, और हम लोग खेलने जा रहे हैं कॉम्पी। हाँ, आ जाओ। मैं तो आपका ही वेट करता हूँ, आप बनवा दो। नया हाईलाइट मैंने डाला है आज। द फक, मेरे को 10 मिनट का बैन है। दूसरी आईडी से आ जाओ क्या? मैं आ जाओ। क्यों बैन क्यों है लेकिन? अरे मैं ये मैच लास्ट मैच AFK चला गया था 2 राउंड के लिए। अरे यार, काम आ गया था बीच में। आता हूँ, रुको पीछे शीज। आ जाओ। कोई नहीं, मैं वेट करता हूँ ना। 10 मिनट वेट करने से अच्छा है तुरंत लॉग आउट करके हाँ, आता ये भी हूँ। बात सही है। डेडलॉक खेला कि नहीं आपने? ना। मस्त एजेंट है यार। नो भाई, मजेदार एजेंट है। अब डेडलॉक खेलोगे तो मेरे को लग रहा है डेडलॉक मेन हो जाओगे। नहीं भाई, मैं अभी क्यों खेलूंगा कुछ दिन, और फिर रेना खेलना स्टार्ट करूंगा। अच्छा, रीना रीना में हूँ मैं। भाई कोई एक एजेंट खेलने ही नहीं दे रहे हैं। कभी बोल रहे कोई और खेलो, कभी बोल रहे कोई और खेलो। हाँ ना। मैंने तो इतना ज्यादा गेम खेल लिया है ना भाई। पहले कितना साल हो गया मेरे को। 1.5 साल सब प्रकार की खेला था। पहले तो खाली अनरेटेड ही खेलता था। कॉम्पी वॉम्पी तो बाद में स्टार्ट किया। पहले तो आओ, स्टार्ट करो, मारो, चले जाओ बस। कर दो स्टार्ट। ईश। yes. Match found. जस्ट ये मैप खेल के आ रहा मेरे हूँ को अभी तो मेरे को लग रहा है किरविल होएगा नहीं, तो मेरे को वो करना होगा। मैं। नो भाई, हाँ खुल जाएगा धीरे धीरे। कौन सा पर्ल है? रेना तो खुल गया, रेना खेल सकता था मैं। खेल लेते थे, बिना खेल के देखते क्या पता अच्छी होगी। फिनिक्स फिनिक्स का मेरे को अलग ही मैटर लगता है। अच्छा अच्छा एजेंट है यार फिनिक्स। हाँ, फिनिक्स एजेंट है फिनिक्स।
Bro, guys, Nava is back after so much time. Yes, yes. अब आपकी टाइटल में लिखा है फ्लैश करने के लिए, लेकिन आप फ्लैश तो करती नहीं। हाँ अभी देखो, फ्लैश कर करके सबके जिंदगी में चरस बो दूंगा मैं अभी। नहीं, युवराज भाई तो घूम से गए हैं कहीं पे। कहाँ गए, घूमने गए? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कहीं घूम घूम से गए I हैं, घूम। know I am over there, but पता my नहीं mind किस गलियों rejects में the घूम आया। thought. Does she feel the same? Let's go. खिलाड़ी भाई, क्या हाल चाल है खिलाड़ी भाई के? Reloading. Heads up! Suppressive! बहुत से मर गया मैं। Spike down Can you A. believe that? Last player standing. मैच स्टार्ट होते ही बॉट से मरा हूं मैं। क्लाउडी भाई आ रहे क्या? रीमेक कर लेंगे, ऐसे भी वो जा रही है सीजीएफ की। मेरे को नहीं पता क्लाउडी आ रहा है कि नहीं। ओ क्लाउडी भाई स्क्रीन देख रहे क्या? क्लाउडी भाई The enemy fears you, Reyna. बताओ हटाना है मैच? Use that. हाँ करेंगे ना, रीमेक तो करना होगा। करो फिर। ना ना ना, रीमेक कर लो गाइस, वो नहीं आएगा। रीमेक रीमेक रीमेक। पूरी फार्म लाइक नंबर 4 क्लाउडी भाई, मैंने देखा है आप पबजी ग्राइंड कर रहे हो एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप धीरे 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 ग्राइंड करके ऊपर आ रहे हो। देखा आपका भाई व्यूज ही बढ़ रहा है अब तो आपके। पूछो क्या क्लाउडी से, मैसेज किया गया क्लाउडी को? नहीं, मैंने कर रहा रुको एक सेकंड। एक बार पूछ के देखना। लग तो नहीं रहा है कोई आने के फिलहाल मूड पे है। नहीं है। कोई मिल गया, मेरा दिल गया। हा 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 हा। ओ भाई डेडली लग रहा है।
तेजस भाई MBBS साला मेरे लिए आवाज अटक रही है तेरी। एक सेकंड। नहीं तेज भाई क्या है आप दिल पे ले लेते हो बातों को मुंह पे ले लिया करो बोलता हो नहीं ओ आए छोटी छोटी बातों को दिल पे ले वैसे भी मैं आरपी चला गया था, मैं तभी खेल भी नहीं रहा था, एक मैच खेल के आरपी चला गया। मत खेलो आरपी चलो स्टार्ट करो बहुत आरपी कर लिया आपने अबे आज से अबे वो रस्सी को तो बोल रहा है वो कि वापस आरपी खेल लिए चालू करनी। अरे यार आप लोग ने ये बेकार काम कब छोड़ोगे जीवन में आगे तभी नहीं बढ़ोगे छोड़ेंगे भाई, नहीं छोड़ेंगे भाई, उससे ही मेरा चैनल चलता है भाई। क्या बात है। Match found. जितना HTRP जितना आरपी के लिए मेरे को व्यूज आते हैं ना उतना किसी गेम के लिए नहीं आते। लोग जानते हैं इससे आपने वही इसमें तो। कभी की नहीं है प्रॉपर स्ट्रीम वैल्यू की मैं क्या आपके चैनल्स नहीं देखता क्या हाँ ना वापस से वही मैप आ गया मतलब ये चाहता है नो भाई कि हम ये मैच जीत के निकालें कौन है तो यार तो इसको खत्म करना ही पड़ेगा ऐसे तो यार नहीं तो गलत हो जाएगा क्या खेलूं मैं क्या खेल रहा था मैं लास्ट मैच क्या था फिर मेरे कल तो भाई पूरा दिन स्ट्रीम करूँ संडे। किस्मत का ही गेम है तेरे होठों पे बस मेरा नेम है रुक जा, स्मोक्स कौन ले रहा अरे है मैं देख। फिनिक्स खेल रहा था मेरे को याद आया मैं फिनिक्स खेल रहा था शीट ब्रो हाँ मेरे को फिनिक्स खेलना था यार प्लीज भाई स्मोकर कभी खेला नहीं मैंने, ओमन नहीं खेला। Let's do this. तो क्यों खेल रहे हो ना आप ये ठीक है खेलो ना। आप ये खेलो क्या बोलते हैं रेना क्या खेलो। बता, नहीं रे पागल, मैं हार्बर खेलूंगा फिर नहीं हारबू नहीं हाँ, भाई, तो अपना इस पे ब्रिमी सही है। मैं फिर योरू खेलता हूँ नहीं हल ये थ्रो कर रहा है देख लो भाई, नुमा भाई ये वो कर रहा है क्या हर बार बता दो क्या? नहीं खेलता है ना वो। नियॉन खेलूंगा मैं, मजा आएगा दौड़ते रहूंगा इधर से मेरे को क्या है। मेरे को क्या बोल रहे हो तो फिर योरू क्यों नहीं खेलने दिया मेरे को हैं मेरे को योरू नहीं खेलने देते नो भाई देख लो अरे तू पता है यूरो पे वो करेगा मैं वो जब खेल जब के टिक लेता हूँ हर बार मरता हूँ पता है इसलिए देख। और मेरा पता नहीं आदत भाई, पता है anime- मेरा आदत क्या है ना कि मेरा आदत है कि मैं जेट का डैश करने के लिए ई हमेशा दबाता रहता हूँ और मैंने एक बार टीपी छोड़ दी और लड़ते लड़ते गलती से डैश के लिए ई दबा देता हूँ भूल करके और मैं टीपी और बंदे के मुंह पे से और फिर वो लोग मार देते हैं और सब समझते हैं मैं noob। फिर तेरे को गुस्सा आ जाता है। तो भाई इधर हो के चले गए हूँ मैं हूँ Settle down. I got मेरे को this. लगा कर न- दे। Man, I'm not leaving anything like that out here, yeah? मैं स्ट्रीम खोल रहा था आज YouTube पर ऐसे कर पाओगे क्या इधर आओ बताओ जरा इधर आओ ऐसे कर पाओगे नो Go, go, go! I'm out of here. किनारे में टच हुए यहाँ कूद जाओ Gotta go! नहीं करना भाई फिर साले तू नहीं हो नहीं ध्यान भाई, ज्यादा दिमाग मत लड़ा, समझे ना। इससे क्या होता है मैं तो बिना नियॉन के भी कूद जाऊंगा आओ यार यहाँ पे कीजिए यहाँ से बहुत बेकार जगह पे मिड यहाँ कीजिए वही पहले राउंड में निकल लो चुपचाप नहीं कोई मिड विड स्टेप लेके भाई फिनिक्स देख Nerve deployed. अबे काम कर रहा है यार Spike down B. अबे तो चेक करना चाहिए था उधर Back off! Last player standing. लो वो डोमिन कहाँ से मार गया ये बॉल में और रेना You won't be serious? You got it. I'm out of here!
रेस के लिए बड़ा बुरा लगा, बेचारा आया तो। मैंने आप लोग को इसलिए बोला मिड से मत आओ, आप लोग जाओ सीधे साइड पे। मेरे पीछे आया सब मर गए। Clear to engage. सन्नानी Weapons नारे hot. नारे नारे ना हो गया भाई। नारे 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 नारे। तू चले तो जाने दो अपनी Bunch of guys B. मेरे को जाने दो ना, पीछे से Knife deployed. Too suppressed. चले जाएगा कि माइंड में। तेरे साथ में हो क्या? नहीं मेरे साथ नहीं आओ। मैंने वापस बोलेगा कि आया क्यों नहीं साथ। नहीं मेरे साथ मत आओ। Our spike down. Spike down B. Enemy and defender spawn. होल्ड कर दे बस, होल्ड कर। बैक से पाएगा ब्रो। Enemy B. Cancel. Reloading. कहाँ से मार गया ये कुत्ता? हाँ इधर से Launching smoke. कौन से उनकी? आराम से प्लान करो। अबे लॉन्ग पे स्पाइक है। वहाँ पे होगा एक। Last player standing. ओह नो भाई गन उठा रहे हो तुम्हारा। भाई वो भी वहां पे फालतू गन उठाया मैंने यार। Grenade. Clock ticking. Gotta go. पता होता कि फैंटम मिलने वाले तो शील्ड लेके जाता यार। साला करके खा ले, एक बार मारा देखो फैंटम मिली। हाँ मुझे तो फैंटम मिल गई पेड़ की। Quick feed, quick trigger. भाई फैंटम मार कसम। और ऐसा भी नहीं ना फुल शील्ड के साथ भी है तो मैं उसके यूटिलिटी कुछ नहीं होती इसमें। अबे यहाँ पे नो भाई रुक जाना, वो है कुत्ता के ये है, मत जाना उसको, पी दोगे तो वो नहीं जाएगा। Spike's down. एक बार जाए बस। Spike down B. एक बार देना नो भाई अपने काम I'm out of here. अरे माँ कसम There. इधर ही है ऊपर। नो उधर ही नो भाई आगे। Last player standing. Flawless. ओहो नो भाई काम 25 करा दिया आपने मेरा। मैंने गन भी गया। No more doubts. गन तो गया। We're ready. ये कौन ले रहा है भाई? साइफर बार बार मर रहा है भाई, उधर स्पाइक डाउन कर रहा है। Reloaded. No. There. Enemy spotted mid. अरे Down. My ult's ready. इधर ही बैठा है, आगे नहीं होना। Suppressing. Alright, move. One suppressed. Down. Cooling down. डाल Flashbang. Reloading. प्लांट करना। बैक से भी आया। Last player अबे standing. इतना जल्दी बैक स्टेप आया भाई। हाँ Planted the spike. राइट लेफ्ट दोनों। भाई बहुत जल्दी बैक स्टेप आया ये। आपका आवाज नहीं है उसका यूटिलिटी का? नो भाई ना उसने यूटिलिटी डाला नहीं कि रिवील करने के लिए। Let's go, Brim. X Kingdom represent.
My ult's not ready. Grenade. लास्ट राउंड भी हार गए। हाँ Going in. Someone is लास्ट राउंड तो इजी था। मेरे पागल है। going up. Nice try. Reloading. ओह Spike down B. Go, go, go. Watch out. I'm out of here. ये थोड़ा Too slow. This One way. enemy remaining. भाई Last इधर player standing. ये के इधर था ए पे Spike planted. ए पे था होली शिट यार चलो उमन को मारा उसने मेरा ट्रेड लिया अरे मेरे को लगा ऊपर जाना चाहिए था। भाई यार नहीं कोई हो नहीं, रहा कोई तो नहीं, नहीं कोई मत नहीं। मेरे को मत यार, मेरे को ज्ञान मत दो। खुद से नहीं हो रहा, दूसरों को ज्ञान देने। Don't teach me. स्काई पर तो अलग ही भाई बैक स्टेप कैसे आ रहे ट्रैप किधर है Please stay alive. मेरे को ये समझ I नहीं hate making new friends. आया। क्यों मुसाइफ करे भाई अपने ये किसने डाला भाई तेरा तो ट्रैप आ रहा है नहीं बैक स्टेप आ रहा है तो ट्रैप किधर है तेरा बैक स्टेप नहीं हो रहा तो तू ट्रैप डालना भाई तू ट्रैप डाला बैक स्टेप आया नहीं बता ट्रेड ने आके नहीं मारा बैक स्टेप Suppressor. My ultimate's ready. One suppressed. Come on, let's go. There. ओ 132 है भाई Down. Down and out. अरे माँ कसम आगे पीछे दोनों Going तरफ। up. Face your fear. Last player standing. Watch your eyes. भाई भाई ये क्या फ्लैश था ब्रो कोई नहीं उसको खेलने दे Remember, stay out of the fire. Super high level tactic. Remember that, yeah? भाई अगर वो ऐसे उमन को भी खा जाता आराम से। रुको निकालते हैं मैच निकालते हैं रुको ना इनको जिधर मरना है मरने दो मिड खाली गार्ड करो अरे तो तुमको नोवा ये बताओ ये लोग है ना जल्दी साइड नहीं छोड़ रहे नहीं कुछ नहीं है, एनिमी बहुत इजी है, अपनी टीम बेकार में पैनिक हाँ। मारती है। हाँ वही तो और ऊपर से बैक स्टेप कैसे आ रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा होने के बाद बैक स्टेप पर किसी का एम वेम नहीं है, बस ऊपर से स्पाइक मेरे को दे देते हैं बेकार। Spike drop. Spike retrieved. देखना राइट साइड पे उमन होता है क्लोज राइट हाँ उधर Someone's B. ये जगह है ये Shutting them down. There. यार ये ना अरे माँ ये हो गया बैक स्टेप भी आ गया नहीं होगा यार, सच में इसके साथ नहीं होगा। Last player standing. Spike down A. ये फिनिक्स क्या कर रहा है, भगवान मालिक है इसका। Charge and shoot. Easy enough. Go, go, go. एक तो मैं अल्ट वल्ट कुछ नहीं यूज कर पा रहा हूँ क्यों हो रहा है इतना प्रॉब्लम मुझे यार लेकिन
चलो भाई घुसो साइड वो तो आ जाए सीधा डब्ल्यू कर दे साइड वो तो डब्ल्यू करना है। छोड़ जाने मिड से मारते अल्ट दूसरा में इसके आओ। फ्लो में हो गया। Walks away. अब यही होने वाला है बस। बंदा को Dead. जाने उधर Shutting them down. ना इधर से उधर अपग्रेड डाउन। आने वहाँ पर मेरे साइड मत खेलो One enemy remaining. ये 105 है इजी ले ले। अबे यार नो वन मर गन उठा लो। गया। Never back down. Go. क्या क्या उन्होंने अच्छा जंप करके मर गए क्या नहीं ग्रेनेड में अरे माँ वो ग्रेनेड पे ही चले गए। मतलब ग्रेनेड उनका There. यहाँ पे रहता है केजे, ठीक है ना, ध्यान देना। ये बॉक्स के पीछे रहता है। फटाफट घुसो एकदम रुकना जाऊँ? नहीं है। क्लोज आएगा राइट क्लोज राइट वुमन आता है इंस्टेंट आएगा देख आएगा यहाँ पे मेरे साथ तो आओ यार आए One suppressed. सामने को भेजो यार रीलोडेड ना मत लेना और वो उतरे यार उसको पकड़ के मारो इधर से जा Kill confirmed. नो भाई प्लान मत करो। Player standing. Spike down A. उजस भाई इतना जल्दा? मर जाओ जाकर के। नहीं मरो मत। इस बार मैं बता रहा हूँ का मारना पहले स्मोक दे दो पूरा बाहर मारना उनको पता नहीं चलना चाहिए कहाँ से आ रहा है। इनका दोनों स्मोक फेल दो मतलब कहीं भी मार दो ऐसा स्मोक Launching smoke. जाओ चुपचाप जाओ अरे स्पाइक के पास जाओ कहाँ जा रहे हो भाई देखने तो दे भाई ये वुमन यहाँ पे कैंप नहीं करता मत है अरे उसको खेलने देना। नहीं करता है भाई वो अपना चेक कर रहा था, खेल रहा था तो उसने I'm कर over. रहा है भाई Go, go, go. अरे नहीं निकलेगा ये मैच आप लोगों को भी पता है फिर अरे नहीं निकला, कम से कम उसको अपने मन से खेलने तो दे। हाँ भाई लोग क्यों नहीं कर रहा है ये मेरे को भी खेलने दे दे तेज भाई सुनो इधर आओ यहाँ पे आओ यहाँ पे तेज भाई मेरे पास आओ यहाँ पे स्टीम भी देना मेरे को यहाँ पे जल्दी मेरे पास आ रहे मैं ये Charlie Mike. Let's move. नहीं दूंगा देखो यहाँ पे स्टीम बीकन यहाँ पे यहाँ पे देखो Suppress it. Scatter. Watch out. Gotta go. अबे Taking go, go, go. ट्रेना बहुत लो है भाई तुम्हारी ओहो। मेरी बहन गलती है भाई एकदम पूछ कर नहीं मैंने तो नहीं किया मैंने आपको वेट करा Spike down B. भाई तेरे साथ पूछ ही नहीं करूँ कभी Last spike player down. standing. भाई वो लोग खतरनाक लेकिन एंगल होल्ड कर रहे हैं, एकदम कैंपिंग जैसा। I'm out of here. सेव कर लेंगे आगे तुम 30 seconds left. HP I'm out of here. This way. ओह 49 उसका यार अरे सर यार Remember, bullets hurt. अच्छा था Go, मैच। go, go. एक HP बचा है साला एक कैच भी भाई लिटरली एक कैच भी
Humbly 1 HP. मरेगा भाई क्या बनना है Someone is A. Shutting them down. Tripwire destroyed. Someone is A. Tripwire destroyed. मेरे को भी आया था ट्रिप वाइड डिस्ट्रॉय का, लेकिन पता नहीं कहाँ सोच रहा था, क्या सोच रहा था। Last player standing. Spike down A. करना होगा। Taken down. पूरा उल्टा पुल्टा खेलना होगा मेरे को। One enemy remaining. Headshot. 10 seconds left. अबे यार Last round before the switch. Spend your cash. Don't look back. मैं ले रहा प्लांट अभी Our spike's down. Spike down mid. भाई मेड पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा मेड पे देख लो ना भाई थोड़ा सा कोई मेरी फैंटम है उधर रुक जाओ Enemy mid. क्या ही करेंगे भाई You should last player Obstacle standing. removed. राइट लेफ्ट दोनों आएंगे नो भाई मेरे को बेट कर दिया। अब मैंने कुछ नहीं किया। Switching sides. Oh my God, बात बेट कर मैं तो आराम से बैठा Shoot the था। bad guys. कर दो भाई कर दो भाई कर दो कर दो यार। कर दो भाई कर दो जिसको करना है कर दो Attackers win. Reloaded. साले स्मर्फर ने साले अरे स्मर्फर की औलाद है सब। भाई क्या स्नर्फर भाई डोमिनिक शांत बैठो मैं मार रहा था मतलब तू क्यों नहीं मार पा रहा क्या मार पा रहे थे आप? कितने किल? 7 किल तो थे। क्या मार भाई पा रहे अभी थे? भी मारना बोलते हो? भाई मेरे से ज्यादा तू मार सकता था ना बट तू बक्सर मेरा कर भी रहा नहीं था लगा। अरे सुनो तो बिट्टू भाई कौन है? अरे वो है क्लाउडी भाई आ रहे हैं और हाँ, क्लाउडी भाई को वो- बुला लो और मैं जा रहा हूँ एक मैच के लिए। मैं बहुत देर से बैठा हूँ, दम थक भी गया हूँ। आप बुलाओ पढ़ाई बुलाओ चढ़ाई बुलाओ अरे बुलाओ, पार्टी ऑफ है। मैंने क्लाउडी इनवाइट भाई। करके एग्जिट कर दिया था। आप लोग बुला लो। किधर क्लाउडी सब भाई किस्मत का कौन सा ही आईडी से कौन सा गेम आईडी है। बिट्टू भाई बिट्टू भाई वाली आईडी किधर है मेरे पे नहीं बिट्टू भाई एमबीबीएस। चलो मैं चलता हूँ। लगा। हाँ ठीक क्लाउडी भाई को बुलाओ ना भाई क्लाउडी भाई तो ऑफलाइन है यहाँ पे Discord पे
बताना आएगा तो एग्जिट करूंगा। Flashbang. ये लग नहीं रहा है कि ये अपना क्लाउडी है।
कहाँ पे है क्राउडी भाई? मैसेज किया मैंने, रिप्लाई नहीं आया। अरे भाई वेट नहीं किया था, वो कुछ ब्लाइंड हो गया था। ऐसा उस समय को बोलने को बोला था। सॉरी रिपोर्टेड। दरवाजा कितना आराम करो तुम भाई। सॉरी बोल रहा है वो फिर भी। भाई सबसे ज्यादा बार मैं हाय डेविल, व्हाट अप, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्रिस भाई इधर आ जा, इधर यहाँ से अच्छा ही मिलेगा। जब तूने निकनेम भी दे दिया उसको क्रिश, तेरा दोस्त है वो? मैं उसका नाम क्रिश है ना भाई। ये पे मैं जा रहा हूँ। One enemy remaining. अरे कौन भर दिया? भाई बोला हमारे पास भाई नंबर नहीं उसको मारा, उसको बोला चल भाई बाद में आना। एक लड़की को Go, go, go. भाई ओमन मुझे ओमन बोलेगा तो क्या खेलता है यार। मैं घर गई थी अपना। इसका नाइट बिट तो सही चल रहा है। टॉम भाई क्या हाल चाल है? वेलकम टू द स्ट्रीम। मैं ठीक हूँ टॉम भाई, आप कैसे हो? कौन सा गेम खेल रहे हो आज का? मैं पापा, so I went to see him. क्या करना है नवा भाई? वेट करते हैं और क्या करा जाएगा। ठीक है। टॉम भाई बीजीएमआई खेल रहे थे क्या? बीजीएमआई कैसे खेल रहे थे, पीसी पे या फोन पे? फोन पे खेल रहे हैं वाह भाई। बस जॉब वाला गेम। अरे 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 Let's fight together. कुछ नहीं। I'm through the connector. Here. Yeah, it takes out that turret, so that kind of forces Crazy Guy to say, okay, I gotta calm down. We don't know how deep they've gotten. Now, Boom, you have to realize that if you've pushed in this far and you haven't gotten contact on that Killjoy, that it's always just been the turret alone, that they have to worry about the flank. But guess what? It's an alarm bot in sewers this time. They're not worried, and so they say, let's go back potentially to that one area we haven't poked at this round. खेलने अनरेटेड कॉम्प पे खेलता हूँ ना। Are they ready? Do they understand that this कॉम्प could पे happen? They तब saw खेलता हूँ the जब deep दोस्त recon आते हैं earlier. तब, या फिर अकेले खेलता हूँ यार। I've got your trail. Oh, and it's going to be the तो Seekers कोई है used right नहीं। away, but they quite थोड़ा मैं don't इधर-उधर know कर yet. रहा But the हूँ। cascade just for safety, and Darian says, okay, I gotta get out of here. I have too much distance to cover up. He's good for one. Does he peek out for another? Oh, a nice hide into Cubby. Do they expect it? No! He gets a second one as well. Pop drop, but Crazy Guy is able to shut down the site. Blaze King finds where the origins of the Tracers are. Oh, the orbital strike, it's gonna deny the plant. That means you have to hold on the Viper's pit as well, and now gets used more so as a smoke, but Neff already inside with the shorty. Oh, Zero was even trying to prepare for it, but it's not enough. One shot from the shorty and Scary from behind. They're making another comeback. They want to run it all the way back to the third map of Haven. मैं 71 लेवल पे पहुंच गया हूँ। Although they haven't really shown throughout Ascension Pacific, they were great in MYSG Challengers. I mean, this is a perfect setup. You have Darian landing his shots. Yes, Boom were aware of it, but they weren't quite prepared for it to be an operator. And at the same time, Crazy Guy's Odin, he's been holding on to that for the past, I don't know, like 3-4 rounds now. Well, Saboom says, okay, let's go back to A site, but it hasn't looked good so far. Only one round in the second half for Boom Esports. But let's see if they can even at least get close
into the site. Of course, a couple stingers in hand, as well as the economy does not sit too healthy for Boom. High Tide comes out. Oh, no tag on the guiding line, and Juicy's able to heal back up, but the Leer isn't going to do... Oh, actually, it's going to do enough good, because Scary will capitalize on it, even though Juicy goes down. Once again, backside not entirely in Boom's control. Neff is just waiting for the waves to go down. Blaze King once again all alone. Spike in hand though, 50 seconds. There's enough time to play some mind games, to draw out some 1v1s. Tries to sneak by, he gets tagged by the shot bolt. He's trying to spray through the wall, trying to draw out at least one of these members. Oh my god. Full health, peeks out aggressively. Gets the kill. 1 round difference. We saw this before, Will. It happened on Lotus. It's happening again. 4 rounds in a row so far for Bleed. And although they just spent their ultimates, it's starting to cycle back up again. The crowd is loving this. Boom, on the other hand, you know, they tried that B-side approach. It has been stopped by just a couple of players. Darian, crazy guy. Every time they go back towards A, it's Juicy, it's Scary, it's Neff. They haven't found an answer to this apart from that 1 round. We should know, 2 points away for Shiro from his reckoning. Do they try to go for double orbs or even just an orb and a plant if they can manage to do so? But the plant themselves have not been clean for Boom Esports. We have to recognize that. The default continue to be the same for Bleed as Neff holds on to mid. Just the alarm bot on the turret is just there for info. It's not there for contact. And Boom, they have to clear it early, but they also have to keep control of this area if they want to capitalize on this setup from Bleed. That's why they're just sending Blaze King in. Eliminate some of that info gathering tool. Okay, waiting on a bit of a longer timing, but I mean, just the, oh man, the discipline from Bleed is so good. They still waited. Juicy once again, same spot, same story. Still into Leer, backup arrives, Neff just sprays it down, and we're not gonna see the spike planted. The reload is through at the worst timing for Berserk. Neff pops out as well, Severine. His shoes have all been melted, down to 2 HP. The spike, not quite stranded in the site, but Boom Esports only 30 seconds. The spike's in A main, it cannot rotate. And even if they did, they would have to walk across the scopes of Darien over on by B. This has to be a save from Boom Esports. The stakes are that high, yes. Economy not looking great. The river has run dry now for Boom. So the save has to be the option. And Bleed once more. They question them. They question Boom. And there's no answer, Will. They tried to send their forces through. But Juicy being such a pesky श्री को मैं देख रहा था भाई रेगुलर स्ट्रीम कर रहा है श्री भाई single round. They have yet to eliminate him. The Nanoswarm was in a dead, but he still lands a shot anyway. Yeah, and this time, of course, because of the Nanoswarm, he actually peeks out further ahead. And that's what throws him off, right? Famous was trying to clear backside first before he turns his head. But maybe, you know, Boom Esports didn't quite think that through, and the fact that the Nanoswarm would push him out earlier, and Famous a little bit too far forward on that timing. Either way, they don't have much time to discuss what's going on because you got to jump right into the next round. Shiro is 1 point away from his ultimate. Maybe they pick up that ult, or maybe they use that to execute onto the B side, but Darien has his operator still. Oh my. Well, maybe you don't need it if you just turn on the blender as they try to cross forward towards that ult orb. But this is exactly what you mentioned, Quack. Bleed, thinking the same thing. There's very large likelihood that they go for the orb. And they're pushing out of A main as well. They know where they're positioned, but such a shot from Shiro. And you don't need to pick up an ult orb if you get a kill. Yeah, I mean, the timing's amazing. The Cloudburst flies forward and Shiro gets the kill. Now Juicy, he's already coming through, but Severine, oh no, he cannot win it. And this means Juicy free to continue pushing forward. And they realize the entry hasn't happened. Oh my god, yeah. Scary. He hangs back. Just trying to buy time, just trying to listen for information. But the smoke, I don't like this. Yeah, I mean, they have to spend so much time to even, yeah, they go in double, that's great. But now you have to come in into top mid. And you can only come in one by one. That's 1, 2, and the third. Oh my god, yaar. Puts Bleed in the lead for the first
first time here on Pearl. I've seen it one too many times. It's in these specific moments. You have Scary and his smoke, and when he's left undetected, he comes out huge. He haunts your nightmares. And just the angle he holds, right? That narrow entry point, you know they have to come in one by one. And they did their best. The second member, I believe it was Berserks, he tries to swing wide. Tried to trade. Yeah, but even that, Scary just says, well, I'm not spraying. All I need is headshots. Seriously, bhai. And a desperate timeout comes out from Boom. They do not, this time, they don't want to let it get to map point. But I can't imagine that their economy is in a great place. Definitely isn't. The crowd loving this. Huge time flag waving out around. I mean, you would think there's a tie team on stage, but no, it's all for Scary and Bleed, right? It's all for him and his teammates. The last hope here in Ascension Pacific to gain a little bit more tie representation potentially in BCT Pacific. But let's be honest, Scary, it's not just Thai fans that are cheering for him. People have been starving to see him once again on the big stage. With Sersha last year, now that team kind of being picked up by Talent Esports, surely Scary is one of those guys who would love to rejoin, but on the opposite side. Still though, back to the game. It is now Bleed in that lead by 1 round. 6 rounds won from past 6 rounds, and they've managed to put up walls everywhere. Will, it's Darian again and his operator. Okay, but the Cascade pushes him out. They get the tags on the recon as well. Darian, he just wants 1 kill. He gets it. He's able to tailwind and updraft that. And Crazy Guy's there for the extra kill. They finally clear out backside. They take down the Odin. But that just means Scary's already arrived. The operator's watching B. Blazeking tries to find the timing. He cannot. Only 2 members left alive for Boom, and they are quite frankly stranded in B long. They have no information from the middle of the map. The pop flash doesn't tag anybody. Severine creeps forward, but they know they still have so many angles they haven't cleared. Severine, he's trying to check for his teammates, and his crosshairs were shaken up as Scary peeks out for a clean headshot. Berserks, he wants the 1v1s, but Bleed's not giving it to him. Another Sky Smoke comes down, and I mean, if you walk backwards, Neff's waiting for you. Only 40 seconds left on the clock. I mean, that's exactly what Berserks is doing. He's just trying to keep calm. There's not too many options, right? I mean, you just have to wait for these 1v1s. There's no way you just walk into your death. And quite frankly, Berserk's probably thinking worst case, I guess I'm saving because we don't have credits. But it looks like it's going to be an over. With another headshot from his operator. Map point for Bleed, 1 step away from extending this match into map 3 of Haven. And with all of those wins too, Will, it is now 7 round by लगातार निकाला भाई. Bold economy, light shields, maybe some budget rifles. That's the best they can hope for. You got the Bulldog being bought up, and then the ultimates on the side of Bleed Esports once again. Everything standing in the way with Boom and their 2-0. Severine, he's got that lockdown. Shiro has got that reckoning, and they need to make it happen now. I mean, the operator's showing up again. Oh my God. They're trying to plant Famous in deep, but they don't find him right away. Darian gets the kill on the Killjoy from behind, but thankfully Famous with a quick trade. Reckoning available as well. It will be used, and Bleed's well aware of this. They back out. They don't feel any need. But here's the most important part. On the other side of the map, Blazeking, he's lurking. He's trying to find another kill because they haven't quite planted the spike just yet. Crazy Guy takes down Famous, and Blazeking, he thinks A side is clear. He's trying to come for support. Juicy will be able to get behind him at some point. Oh, a little bit of a hides behind the high tide. Finds the kill. Once again, 2 members only left alive for Boom. It's all up to Blazeking, quite frankly. Shiro, he's at half health. He's trying to find a timing. He can't get the kill. He's just trying to stay alive until Blaze comes to support him. He's waiting for Crazy Guy, but Crazy Guy just sprays as he runs around the corner. They now know where Blaze is. And ladies and gentlemen, we are going to a map 3 as Bleed keep their hopes alive for a shot to get to the grand finals and ascend from challengers into BCT. Keep their dreams alive.
alive. A bit of a stare coming out through to the other side. Boom, Esports and Bleed. The heralded story continues. I mean, just thinking about it, that final round, the way that they've been playing, that Odin, that operator from Darien, he pulls out the plays at the last moment too. It's just a little bit too slow to react. Boom, Esports, they leave that grip. Again, it's little things like that, right? Bringing out the blades. You've been pushing out with the op and then always backing off. And this time you say, no, I'm going to continue to press the issue. Go for that kill. I mean, we've seen some crazy teams do it before, always to great success, and Bleed will continue that trend. And they say, you know, it's not as clean as it used to be, but this composition with the Reign of the Duelist, it's still got legs. It still carries us forward to try to get to a map 3 in this single elimination best of 3. I mean, maybe not on the attacking side, which was ended in a 9-3, but on the defensive half, oh my God, Bleed, with the way that they control the map, with the way that they put up roadblocks everywhere, it was just that much more difficult for Boom. The Aftershock should lock them up with the stun tree. The barrier orb just soaking up. But Bleed Esports, they have to push out one way or the other. They're kind of stuck in the middle of nowhere. Textbook-wise, that was the right play. But is they have to keep moving to break down. I mean, then they just play post-plan. Yeah, they will all make it out safely this time around. Okay, early Nanoswarm draw out though. 2 taps, 2 kills. Shock boats, damage already being done. The Molly still in the hands of Scary. Oh, Severine just get the counter kill though through the smokes. The Molly's on its way down. Oh, Severine, he's come through. He gets the spot and he gets the kill. Can they stick it to the ab? Severine goes down, the efforts to push forward. But the COVID just goes down as Shiro gets 1 kill. Once again, Shiro versus Scary. Shiro, he's just gonna try to stick the second ab. No! He cannot do it. Scary with the mind games once again in the 1v1. And Bleed gets a 3rd round. It's that surmounting pressure, Will. You feel the spike timer beeping, beeping, beeping in your ear. And you just think, do I stick onto it? Do I let go? Because I know I have my opponent staring right in front of me. And when that opponent is Scary, you think twice. Such a good execute coming out from Bleed. A sudden change in pace. They take the side in full. You might think that, yes, it's a bit of composition diff, but also just how well Bleed actually truly plays off of their individual firepower sometimes. Yeah, if Darien can always be good for the first kill, Juicy, he can start to creep around these snake bites over on B. So they're trying to force some default changes here from Boom, and Boom will respond in kind. Oh, a nice tag early on though. Okay, May's been taken, yep. Severin. Okay, Severin, he's hiding inside the smoke. They're trying to check for it. Oh, he gets 1, he ideally would have liked more. Oh, but Blaze King with another judge, he gets the fight down at the standing Juicy. Neff finally getting the trade, but no, it's Berserk's already here for backup. Blaze King bought so much time. The Reckoning will deny the spike away from Crazy Guy. There's just too many angles. And Boom Esports, they will clean up the first half, 9-3. That's the second 9-3 that we've seen today. Maybe even a little bit more, but still, I mean, given the place, given the buys, the last thing that Bleed expected would have been the judge. I mean, you start things off with the guiding light, you get information, and then rotating the way around it. They had no idea that this was about to happen. They had no idea that Blaze King would have been at the end of that alleyway. Man, and just getting the flying jet right away first, right, buys him a bit of extra time to reset for the second kill onto Juicy, and that meant down. The rest of Bleed had to rush to try to go for the plant. We shall see if Boom Esports can continue on with this momentum to take down Bleed 2-0 potentially. The Wolves, Boom, they've devoured Bleed once before. We talked about this on the desk. This is a bit of a grudge match between the two orgs. Last year, it was that team. They beat Bleed, they knocked them out of LCQ, and then secured their spot in towards Champions Istanbul. And this time, भाई कौन सा कैमरा है इतना खतरनाक? They beat Bonkers. They beat their way through on towards playoffs. They secured the top seed from their group stage. Are they truly going to get knocked out in this moment? On their strongest map as well, with a composition that only they've been able to master, and now the cracks are starting to show.
Just came down to react. Right. I mean, that's the thing about Boom. You mentioned how they looked confident just to go in for it. They have those round leads, but if you think about it, these guys need to be. Gets dropped. Only 15 seconds on the clock. It's counting down towards the 10. And Berserks, he has picked it back up, but he is not safe. Blaze King has to protect him. Berserks will get the kill. 6 seconds on the clock. Blaze King, he's just watching for the peak. No! The spike will not get planted, and an instant double kill from Bleed as they get their 6th round win. Such an unbelievable hold. You mentioned how दो लेजेंडरी प्लेयर के लिए कर रहे आई गुड खा लिया था मैं खुद को मेडल बास्केट कर दूंगा। अरे चुप हो जानी चाहिए तेरा बैठो साला नीचे नीचे दिखा 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 गुड ही होता मैं लेफ्ट में चूज अरे भाई वोल्ट मार लेता भाई टैप दबा ले थोड़ा सा एक ही किल ऊपर है यार भाई 22 डेथ है तेरी देख ले भाई शर्म कर ले थोड़ी सी मेरा वो भी लड़कर कहीं के तब जाके तेरे कितने किल हैं मैं धर्मेश भाई को पीछे पीछे सिखा इसलिए भाई कुछ आवाज नहीं आ रहा। तेजस भाई One enemy remaining. Reloading. साला मार्शल हरामी भाई फैंटम उठा फैंटम उठा मेरे हाँ I'll burn brighter than their phoenix. Just watch me. तेजस भाई MBBS Rather, this was their map pick. We know they do so well on Pearl, but something was going wrong. Scary's left standing alone many times. Everybody seemed really off in the first half of Masada Bleed. We were seeing some uncharacteristic misses. Scary, he was still putting up decent numbers for the team comparatively, but in the grand scheme of things, even that was a bit of a weaker performance for him. Yeah. But then as soon as they got over onto that defending side, they just had an absolute chokehold on the map. Yeah, there were a lot of really good moments, like Severine's Killjoy is doing a great job. The Viper, like a lot of those vulnerables were actually really impactful with that utility from the side of Boom, but Bleed, man, like once they get over that defending side, they were just incredible. And frankly, a lot of it to me comes down to the op of Darion and the Odin of Crazy Guy. Like the op of Darion, he's doing a really good job with his awareness, keeping himself alive for the most part, except for round 3 when he bought an op and died in the site. But anyway, other than that one tilted me a bit. But other than that, they were great. And again, I think Crazy Guy here showing really why that Odin is such a great investment against the Harbor. You're able to spam through those smokes. You're able to spam through the coves, all these things. So really putting that gun to great use was Crazy Guy. Yeah, I mean, time and time again, you see the pushes coming out of B, out over at B main, and then he's just spamming away, and they come running right into it. Headshot, gets a catch onto somebody like Famous, and after that, Boom just don't really know what to do. They lose that entry power. They're running just the jet here for the entries.
And it all just comes falling apart. We see time and time again they're drifting towards the opposite side of the map, but then it's like, oh no, at the end we have to just go back over to B. And it just felt like there was so much miscommunication happening back and forth in every single round here on this attacking half. I mean, they get one attacking round in that second half. That's it. They win the bonus, and then they lose everything else. It's 8 consecutive for Bleed to just go ahead and take the map 13-10. A huge run back for them, and I think that Boom, I'm concerned that as we get ready to go into Haven, a map that Bleed has not shown yet at this tournament, I'm concerned that Boom has boomed themselves. I think that after you have a map get away from you like have that 9-3, and you can only put up a single round win in the second half, that could shatter you moving forward. Do you agree with that, Paper Thin? Yeah, absolutely. I mean, even though, you know, Boom was really good on Haven yesterday, we have no idea. We haven't seen Haven since May 26th from the side of Bleed. So really no idea if they're going to run their normal comp, if they're, which is typically... लेफ्ट से लेफ्ट तेरे पीछे 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 हाँ लेफ्ट हाँ साइड पर है डेडलॉक अरे छी भाई लीव तेरे मुंह के सामने चल के चली आई तेरे पीछे अरे यार पीछे देखो आगे देखो यार मैंने क्या कर रहा है डेडलॉक 55 ऐसे खेलेगा वीसीटी वीसीटी के वी भी ना खिलाए कोई इसको मैं कोच ठीक हूं यार I want to see if they have something a little bit different. We have seen some experimentation on Haven. We've seen, you know, bringing out Viper carvers as well. So I'm curious if they do have something like that in their back pocket that they can pull out here. And I'm almost noticed now they get into this third match situation. चलो 0 किल चैलेंज करते हैं 0 किल करना है नहीं यार मेरे से गलती से लग ही जाएगा गलती से तो मेरे से लगना चाहिए यार नहीं you know I'm a very pro player They managed to bring it back. So can they persevere? Can they turn this around? Yeah, I mean, Bleed. आपने गांव को रिप्रेजेंट करके आई है So yeah, it is the beer combo. Nothing out of the ordinary here in terms of the compositions. You know, Boom just really spike down A. Just really pushing the pace. I mean, it was go for Boom. They had bonkers on the ropes the entire time. So I don't know if you're going to be able to get that momentum, get that confidence. One enemy maybe in the first half, because that seems to be the way that these maps are going. That Bleed kind of comes out slow and then figures it out once they switch sides, no matter which direction that may be. With Bleed being on the attack side. भाई क्या है ये कुछ भी मारा उसने हेड कैसे लग गया इतनी दूर से Pretty balanced on this map, maybe a little bit attacker side, but who knows with the mirror comp, anything's possible. I'm pretty sure these are क्या तो सामने वाली टीम का कोच होगा अरे नहीं भाई वो बहुत दूर थी और उसने राइट क्लिक पता नहीं क्या उसने अखियों से गोली मार दी होगी ये भाई तू गन ले मुझे तेरी एक एक्सपेक्ट करते This is called business. ये मेरी गन है. This is called business. Can they bounce back? Can they rewrite history and deny Bleed once again, just like they did the LCQ? Right there. बेचारे गिरे के पैसा उड़ा Is it map 3 Haven? Can Boom turn this around? Instead, or is Bleed going to be the ones moving on to the final tomorrow of VCT Ascension Pacific? Goody. Heal, good heal. चुप रहे नेस अबे मैं हार्बर हूँ भाई 5 के 5 मिनट ठीक है भाई I think that's how I feel like Quack. I don't know about you, but the crowd is absolutely exploding. अरे 10 p.m. A lot of, I mean, pretty much I think all of them have been here since like 3 p.m. And they can't wait to find out who moves on to the grand finals. ये मुझे स्किन अच्छी लगती है Spend your weekend, right? Come out here. भाई सबको मार के दिखाओ तो मारो तुम वेलो प्लेयर हो मेरी ट्रेनिंग बर्बाद हो रही है तुम पे कोई नया शिष्य ढूंढना पड़ेगा तुम तो मुझे अंगूठा भी काट के नहीं दोगे और मैं तेरे को अपना ग्लोरियस माउस दूंगा अरे Boom You. first one. And then another comeback,
And it's just that strong, that scary triple kill is something that I think I cannot मेलो से forget. सीखो, वो दूर से देख के And सीख now गया. coming on towards Haven, yes. मेलो टीम देख रहा था, अंगूठा भिजवा देना 500 पे. फ्रिज में रखूंगा. जैसे उसका रखा. Very different teams. If you think about Juicy versus Famous, they have very different tendencies. Yes. Not just that. My territory, my rules. Secondary dueling. I think on this map, apart from being such a great चलो एक को तो मार के मरा. he also plays the operator sometimes. मेरा एक को मार के फिर मर जाऊंगा तो चलेगा. Killjoy doesn't need to always focus on her utility. It's kind of set and forget for a lot of time. KJ भाई जा कोई नहीं Hold another angle with that operator. See if it comes. जा लगे मार जा. You have the lead esports on लेफ्ट में जा. this time जा around. पे जा डरता क्या है. The first. ये रोटेट हो गया वो शायद. They've always had a rough first half today. Now, only 13 rounds standing in between either of these teams and a chance to play once again tomorrow on the stage. Here in BCT Ascension Pacific 2023, the barriers go up. And, oh, it's just a quick fire mid. Try to... Spike planted. Nice and early with the flashpoint. Oh, that's an expensive piece of utility. You would have hoped that you saved that up for that A retake or A hold. But now comes out Famous and his contact. He gets tagged up and stunned. Oh no, the drone spots him as well. They know he's अबे stunned. गोली चला दो. Oh! 40 tag है. Joke's over. You're dead. Into the aftershock. गया. Takes so much damage. दौड़ के जाना. For the first time, we're seeing a जा लेफ्ट में. Nice. Blaze, he's still behind them though. Lands a quick tracing shot, and then his teammates coming up from A. Crazy guy trying to redeem it, but now it's really anybody's. Berserks, not much help, but neither does Scary. Only 5. Crazy guy. That's the player they want to मैं तो ऐसे रोड ही नहीं बनता अगर ऐसे खेलेगा. Scary really just trying to play contact. And then Crazy guy ready for the no-brainer. But that choice Coming in, and it's going to be Crazy guy who gets the headshot. Bleed. Take the first pistol. The first time they've done so. The first time they have won the first round of a map today in this best of 3. They only got their first pistol round win in the second half of Pearl, and now they're continuing that trend. And it just inspires confidence for the Bleed fans everywhere. But for Boom, I mean, with such an early paranoia being sent out, with the way that they came back through, yes, it's a good couple of shots, but they almost look a little bit too loose with how they're playing. Yeah, the desk mentioned that as well, right? I mean, did you boom yourself a little bit after that loss on Pearl? You had a lead in both the maps. This time you let it go by. Now another quick hit into A lobby from Bleed, but they're not quite Boom Esports. They don't run all the way through. A nice shot from Shiro. Just trading damage for damage. Because Juicy doesn't want to let that go into enemy. मैं तो मैच देख रहा था VCT का. मैं भी वही देख रहा था ब्रेक दिया. आओ शेयर कर लो उस पे डिस्कॉर्ड पे देखते हैं साथ में. डिस्कॉर्ड पे आओ. डिस्कॉर्ड पे लगाओ. लगाओ. नहीं लगा दो क्या? अब तो किलविज भाई का भी पीसी आना है. क्या हुआ? रेमी भाई पहले तो अपने माइक का वॉल्यूम चेक करो. मेरे को याद दिलाना. मेरे को नहीं पता यार मेरे इसमें कम क्यों होता है. अरे वो मैं शेयर करता हूँ. उसको इंक्रीज करो वॉल्यूम को ना माइक वाले पे सेक्शन पे क्लिक करो. कूल है भाई लिटरली इनपुट का बोल है. ऐसा है क्या? Nice and early in the sight. He's hiding behind the arrow, but there's the aftershock. It draws him out. They're trying to spray him down, but meanwhile, 2 kills across the map within the sight. The flank already taken over by Blaze King. That opens up a timing for Severine, but the gunpowder isn't too much. No, they finally take down the Vandal. And now it's all Crazy Guy alone with the Spectre. अरे वो लिया है उससे. Couldn't pick up a gun just yet. Just the Sheriff. But Blaze King, he tags him on the head. दिख रहा है क्या? Gets the timing. Blaze King draws him out long enough. Vandal. Upgrade here for Shiro and Boom. दिख रहा है ना? Round 2. What a crazy way to turn things around. It's just round 2, Will. And you're already seeing how Boom still has legs to run for it. Blaze with such the presence, such a mind to just jiggle outside a garage and then suddenly deciding to बैकग्राउंड वो लिया वहाँ से यार. I think they were kind of considering the fact Amazon that, yes, से. that drone might be something that Bleed are using to cut ये पूरा noise, 'cause वॉलपेपर they've लिया है done this क्या? before. हाँ वॉल स्टिकर है यार बहुत सस्ता है 250-300 रुपए का ऐसा ही कुछ. इतना बड़ा वॉल That स्टिकर. audio. Another shot तो just to scratch क्या up पेपर the है members समथिंग of लाइक. Bleed. अरे प्लास्टिक के है. Take some damage from that, but अरे it is quite a सस्ता bit as he अच्छा doesn't है. have armor. मस्त है ना? King spots him, couldn't get the first kill. Oh!
सही है यार फिर तो। हाँ मैंने ट्राई करने के लिए लिया था कि देखता हूँ कैसा निकलता है, मतलब अच्छा निकला यार। नहीं लेंथ वाइज भी काफी बड़ा है यार वो। हाँ लेंथ वाइज भी काफी बड़ा है। मेरे को लगा था पता है कि छोटा सा होगा, मतलब हाँ मतलब ठीक है यार। लेकिन पूरा वॉल पीछे। मेरा रूम सेटअप हो रहा है बस, उसके बाद मैं भी मंगवाऊंगा एक रूम सेट हो रहा है। हाँ बताया तो था मैंने। स्ट्रीमिंग नहीं यार, वैसे ऑफिस बनाना है, उसके अंदर ही स्ट्रीमिंग चलेगी ऑफिस के साथ। वैसे ऑफिस सेटअप तैयार कर रहा हूँ यार, ऑफिस का दिक्कत होती है बेडरूम में। Oh, a twist of fate as Berserks doesn't घर find से that काम peak, होता है but they ना। don't have too much time left now. They have to go वो तो ठीक है, खेलने को ही आ रहा है क्या? crazy. Oh, they get the मैं खाना खाने जा रहा हूँ भाई, खाना खाने के बाद देखता हूँ एक आध मैच। on both sides of the boxes rather. And Crazy Guy only has a classic. He cannot get it. And Boom will be able to stabilize with another round. What a sudden twist of events. The way that they just managed to catch लास्ट मैच देखा था इसका ब्लीड और बूम का। उससे पिछला देखा था जो उसका था फिलिपिन और उसका जापानीज टीम का, वो देखा था मैंने। भाई पता है इनमें सारे लोग स्ट्रेस्ड खेलते हैं भाई। हाँ तो भाई पैसा लगाया दाव पे, खेलेंगे। वो खतरनाक खेलते हैं भाई, क्या एंगल। इससे मेरे को बहुत कुछ समझ मतलब समझ में आया मैप का कि कौन सी वॉल पे भैंस के वॉल बैंक करोगे तो एक आध किल मिल जाएगा। वॉल बैंक सीखने को मिलता है भाई इसमें, तगड़ा वॉल बैंक मारते हैं इसमें। एंगल्स पकड़ते हैं भाई। And he's going to spam just to keep people at bay. The main thing is, though, you got 2 ultimates now in the bank of Bleed. Neff, he could very well use this to set up outside of A long to push and execute onto the A site. कल मैच है मैंने सुना। कौन से टीम का? अपने इंडिया के सारे कंटेंट क्रिएटर्स का। अच्छा वो तो वो मैच होता है ना, पिछले भी सिटी में भी हुआ था ना, लेकिन उसमें सिर्फ हाँ पिछले मैच में भी होता है। And he dodged the rolling thunder as well, not hit by it just yet. The aftershock buys time, but the flash lasts for a bit too long. Shiro there for backup, and he survives with 10 HP, cleaning up Bay main. क्या बोलते हैं उस मैच को यार, शो मैच। The triple kill coming through. It was the Aldro. एक क्रेजी गाय का पता है मेरे को, क्रेजी गाय जेट खेलता है मोस्टली, आज सोवा खेल रहा है। Just to allow his teammate to actually peek off of him, and then of course the utility through from Bleed as well. I mean, Boom, the Hunter Fury, yes, it did come through, and it just gives Boom so much more presence around the A side just to fight back. Expensive round for Bleed. Absolutely. 3 stingers now for Bleed. That's all they got. अरे डेरिन वही जो ओपिंग करता है, डेरिन। Twice already in this map. Below the operator, famous. He's good with it. He will escape away from the fault line, but they actually take that timing to plant Blaze King back into the site. Bleed not quite aware of this. Blaze King gets one, he gets another on the escape. Darian also down. Scary and Crazy Guy with stingers. That's not the gun you want against these Vandals, but you didn't have a choice. You were put down into this round already on your back foot. And with that, चलो मैं खाना खा के आया guys। Trying to find a bit of peace. Another gap, perhaps to sneak through. Maybe one pick gives you a weapon. But if not, I mean, look at how Boom are just holding up around this. The dark cover gives it away. Scary trying to sneak through, but easily spotted out by Shiro. It all comes down to Crazy Guy, who is sneaking his way onto the A site. But when you have 5 players coming up from Boom, this is a retake that you cannot hold against. Yeah, I mean, quite frankly, Crazy Guy, you just got to take what you can get. Go for the plant, right? Boom's giving it to you. They don't want to take the risk. They don't want to give over the rifle upgrades. Oh, the fault line to keep him locked in, though. He's on top. Yeah, he's on top. If Shiro didn't get it, surely it would have gone over to Severine. But Shiro happily charging his Hunter's Fury back up. Yeah, there's quite a few members who wanted this one. For that ult point, it is going to go over to Berserks. You still have Blaze King with 1 point away from that lockdown as well. Well, so far, this has been a great run. We've seen the first pistol win from Bleed, and then Boom coming back with 4 rounds in a row. In the previous maps, it would have been Legia calling a timeout right about now, just to turn things around. I don't know if it's going to happen again, especially on a map like Haven. It comes down to how the players actually frag out. And Famous so far, he's been starting to wake up a little bit. And we were talking about how loose Boom were starting to get, whether or not their mental got boomed.
they need to calm down, and it feels like they're starting to come back into form. Yeah, absolutely. Shiro with 11 kills. The Des pointed him out as that key player early on. The comparison up against Crazy Guy, the two Sovas. And this time around, I mean, nothing against Crazy Guy. He's doing what he can, but Shiro truly the hero for Boom Esports. Now a triple stack here. The drone will spot, and immediately they're ready for a boom. You're ready to trade. You've got the utility lined up as well. And look at this setup too. Severin up on top. Bleed are going back to their roots, playing it slow, playing it careful. But unless Shiro can gather information for them, unless they can find some kind of an opening pick, they're not going to fully blindly commit. Meanwhile, on the other hand, it's just going to be that presence of an operator from Famous still on the C site. So Bleed are very much kind of either funneling to B or A, and if it is A, you got 3 players waiting. Yeah, they're working off an assumption that they cut enough noise to draw out confusion from Boom, but especially with that turret getting taken out in Garage, and they're just trying to run this in, and Berserks, he has not enough to get the fault line through. He didn't expect the flash. He tried to anti-flash away, but Severino, he cannot get the spade transfer as he sees Juicy run across his screen. The site giving up, an unfortunate timing on the side of Boom Esports. Berserks, he just had too many thoughts going through his head, couldn't find the right timing, and the operator has to be saved here for Famous. And that's one of those things where you can feel it in the crowd, feel it in the arena, that moment. You hear the crowd going off, you feel that pressure in the air, you know what's at stake, and sometimes it becomes a little bit too much, and you get caught out with utility in hand. Maybe you're looking at the mini-map, maybe not, but whatever it is, those mistakes gives Bleed just a little bit more. Now Famous trying to hold on to this operator. He watches the angle. The crowd is starting to rev up again. They say, okay, our team's coming back. Let's get behind them. Bleed now 2-4 score line. But of course, operator and plenty of credits on the side of Boom Esports. Triple ultimates as well. They're not in too much trouble just yet. Just a great entry right as soon as you saw that flash go through and it was hit. You knew you had the chance. I mean, you even saw, of course, the mechanical arm from the breach held up high, and that's going to be the easy entry coming out from Juicy. Going into round 7. Boom still in the lead, but can they recover, stabilize? Famous, he's been... Oh, Shiro's actually going to cover for him and takes out Juicy, and that allows Famous to creep forward. He's holding a closer angle as well. Just trying to fake away from the tag. And then exploring B site. Blaze King loves to play pivot around C Link though, and this is where he can punish a lot of players. Known to be strong with his little bit of strafe shot. But again, Bleed cutting noise, slowly maneuvering around the map. You've got that alarm bot, and it only covers up the window. Blaze King is going on a journey in mid. His turret was taken out in B. He creeps forward. Yeah, he sees that, okay, no one's coming through. They hear the noise coming in to C site. The recon bolt denied, and there's the Rolling Thunder. The Aftershock, it's not going to do much damage as Famous gets the kill right as the smoke clears. Meanwhile, B site just abandoned by both teams. Okay, Scary trying to get a better position on A with the From the Shadows, but he's spotted by Shiro. Scary just has to hold on to this position until his team comes. However, that means no one's watching the link coming in from spawn, and that's exactly what Severin is. Double, and Blaze King will pick up the kill from behind. Crumble beneath my feet. Nice. Just with the way that still they control their way around the map. Yes, Bleed, they might cut noise, they might, you know, try to find a little bit of a sneaky rotate. When you have a player like Blaze King who knows exactly when and where to peek out, having that feeling, having that presence, just to go wrap up or back around A long, he catches them from behind. And also, Shiro finding Scary, kind of knowing that From the Shadows would have been used. And Shiro, 12, 2, and 4. I mean, every part of that number stat line looks impressive. And once again, he's trying to provide support for his jet with that operator. A site, I mean, it's just not getting opened up too easily. Yes, Bleed had that 1 round 2 rounds ago where they found an opening. But the recon boats, the operator, the support, the setup off contact with the fault lines, it's just too much. Blaze King, oh, he cannot stand that tempo. Just the bulldozing through of 4 members of Bleed. And now they surround the site. A bit of a garage presence as well from Crazy Guy. And then he rotates back around
Mid, Bleed are now spreading out across the map despite the spike being planted. They want to catch them on the rotations. Crazy Guy has such a great timing for this flank. Yeah, exactly. They don't suspect him because they see people climbing out of garage, and it's going to be Darian who draws the attention for Crazy Guy, getting the last kill of the round. But it all started with being able to push out towards C-Link, getting that kill in garage that opened up that entire other half of the map. A little bit messy, a little bit strong coming up from Bleed. And like you mentioned, yes, it's that kill towards C-Link. It's something that you have to think about as Boom Esports right now. Yes, this is how you play. Yes, this is what you are known for. But it's because you are so known for it that Bleed start to find their way to adapt around some of this. They want to punish you in your most predictable spots. We also have to remember, okay, well, let's not remember, because right now the round's kicking off right away in round 9. Famous dashes forward to try to make something happen. Oh, and he tries to spray. It wasn't even the Vandal, and Juicy still able to answer back, gets the pinpoint precision. Man down for Boom Esports. Shiro also very low trying to support his teammate. You just can't go off with these crazy aggressive pushes against Bleed, especially when they play this low together. We talk about their 5-man movement all the time, and they're doing it again. Maybe you get a little bit of control outside of C Long, but what's going to happen on A site? Unless Blaze King is going to pull off Miracle. Bleed, they are coming through. Oh no, Blaze King, you're going back into the site. You still have the lockdown in hand. You have to stay alive. The Hunter's Fury, yes, it's being used to buy time. It's actually good for 2 kills. Draws away enough attention of Blaze King. Now able to get another kill. He does eventually go down, but the Rolling Thunder has to be used preemptively just to create space. Bleed knows that if they just planted without using that they would get caught off guard. They're trying to bait in. Severine on a nice timing from A short. Spike down, way far away from Neff. He just wants to get at least one more kill to try to even the numbers, but even if he does, he's not going to have enough time. Yeah, he can't chase too far forward. And this is where I want to see that discipline, that control, that hold from Boom. You've gone aggressive before, not at this moment, not right now. 15 seconds left, and Neff might be looking to possibly pick up the spike at the last moment, or maybe not. Yeah, he's just going to go for the save. I mean, that drop would have been too risky to begin with, even if he tries to get onto that box. Now, Boom has no intention of letting him carry over that rifle. They're trying to come through. Oh, is Neff going to peek out? No, he will play it safe. He knows how valuable that Vandal can be. 6-3 right now, Will. Oh, and this was just incredible. I mean, gets a kill with the first one, and then, of course, got the double tag. And with that chaos, that opens up the timing for Blaze King to peek out. What are you doing on your phone? You gotta watch this game. Well, the eyes were still on the screen, okay? It's not good enough. You need your ears too. Well, listen, maybe it was their mother, all right? If your mother calls, you always gotta pick up, all right? Tell your mom to watch. But okay, so the score being 6-3, yes, it's a bit of an expensive round, but such a great way to bail your teammate out. Good reads coming out from Boom. And then the timeout being called by Legia, Bleed's coach, finding that impact. It's happened before, especially in the past two maps. And this is what I'm worried about, because despite Boom having a lead, sometimes they let that slip away. Sometimes they overheat a little bit. I want to see Meow just kind of calming down the team. And at the same time, for Bleed, what is their next play going to be? Yeah, because it looked like, maybe they had that, answer against the fast aggression and things like that. Now, what I wanted to mention at the beginning of this round was the fact that, okay, earlier in the rounds, Bleed went with their traditional setup of creep around, take out the turret, creep around again, and then when they hit B site, they just bulldozed through, right? So this mental conditioning, the mini game is starting to come online for Bleed. Curious to see if they work off that mental conditioning once again. Now, it would be a little tough if they run into the sight lines of Famous, though, as he picks up yet another operator here for the defensive side. 6-3 lead for Boom Esports. However, bear in mind, Crazy Guy does have his Hunter's Fury. All the lockdowns, all the ultimates in this round could very well make an impact, and it all starts with this A-short rush. Severine is prepared for this. He hears it and backs up, trying to set the crossfire. Shiro's trying to play for contact as well. The shock darts just trying to get some damage, just trying to draw them out. The aftershock coming through as well. Yes, the lockdown absolutely goes down, but the question is, no, they were not ready to push through a main on a timing. Bleed thought they might be able to just let the lockdown go through. Boom Esports had no intention of doing so. They were very prepared for this round. And now just holding
cutting noise again. They're trying to sell this fake that maybe they rotated through, but Boom aren't budging. They're still holding down on this site. It comes down to how well they hold. They send out the drone to gather information, but here comes the hit. Oh, and Shiro with a nice timing to peek right around. They hear the Huntress Fury coming through. It actually does enough damage, gets enough tags to clear out the site eventually. Sure, Shiro gets the first kill onto Juicy, but he was really just the bait. Oh, the timing on the smoke. Blaze King did not have the right information on that one, and Famous, is he going for it? 1v3, he's trying to walk through. I mean, you know what, I get it. It's a nice attempt mentally, but at the same time, you had an operator in hand. You couldn't just keep swinging out. That's a rough one. Incredibly rough. And now, although they do have quite a bit in the bank, maybe this round's just given away to Bleed. It costs them a couple of ultimates, right? The Hunter's Fury from Shiro, it was great in giving them control over the site as the rest of the team, as the rest of the squad pushed through. The retake there, a little bit weak coming up from Boom, and you hope to expect more. Now that Severin brings out the Odin. Oh, we've seen the Odin do work before. See if we can continue here on Haven. Oh, fast movement though. Yeah, once again, Bleed, they're pushing up the tempo. Worked for them in that previous round. And this gives them full control, but Juicy thought he had cleared all the angles, but there was just a sliver left for Famous on that platform. And now with the jet down this early, I mean, when you're dying going into the site, that's one thing to draw crosshairs, but now, Bleed, that fast tempo, no longer possible. Noise cut again, and then the dark cover to possibly sell a bit of a fake outside of Garage, I mean, inside of Garage. It's going to come down to Shiro and how ready, how prepared he is for this. Hovering back around A-Link, he hops in through the site again. Yeah, he just sees the utility, and now he gets punished. He tries to green for extra information. I was about to point out, Quack, as you were talking, that he was correctly backing out, playing it safe, trying to play the numbers game. But then he goes in and says, well, maybe I should check for information. That leads to a step. Severin gets 1-for-1 traded. I mean, sure, Bladestorm available here for Famous, so they could go for the retake 3v3. They will be going for it. Blaze King opens things up with the first kill. The turret taken down, but Darren answers back on contact. Both members of Bleed in a main, but Boom not quite sure where. Okay, now they see the paranoia coming through. They know where both members are. Half defuse already done. Scary with a nice headshot. He knows he's not sticking the defuse. The shadow step just to play the mind games. They know he's not sticking it yet again. And Scary gets him through the corner of the wall. 5-6 score line. Coming back now, and it's no longer a 4-8, no longer a 3-9 for Bleed. These guys, they are in control. As soon as the spike is planted, as long as it is planted, they have that advantage and they will play off of it. Boom, on the other hand, just a little bit sloppy with how they go in for the retake again. Being too confident, going out for those duels, going out for those peaks. When Scary is in control, you can't take those fights against him. No, you definitely cannot. And a lot of these is Bleed just taking initiative, right? 2 rounds ago, they used Hunter's Fury knowing that the lockdown was still available for Boom, but they just say if we pile on through, that lockdown will not find use. This time, they get the plant. They're able to get out of range fast enough. They once again wait for the aggression because they know Boom is starting to get antsy. Oh my god. And so antsy, they are up a long. Severin not quite yet discovered, but Bleed does have an inkling. Yeah, there's the fault line. They go for the clear right away. A nice swing off of that stun. Crazy Guy opens things up. And now, once again, they cut noise, right? Bleed just says, okay, if we just go step by step, Boom Esports, they will try to creep forward. The recon bolt gets cleared, no information. There's the shock bolt, but Juicy's ready for the peak. I mean, Bleed's starting to get into the heads of Boom Esports, Quack. They know the mindset of Boom, that they're always going to try to swing for these duels. A short, not quite clear just yet. Oh, the Odin, it's doing work. Blaze King. Now the spike will get planted. Blaze King's going to try to do some damage with the Nano Swarm, but not going to quite find his target. Famous waiting up in heaven. The smoke clears just now, and he gets the kill on to Darion. Next position, though. Are they quite aware? Well, now they will be. Famous, very low on health. Nev's going to try to rotate over to heaven. They don't know. He tries to jump over and he gets the kill onto Shiro. Are you kidding me? The line as well. He sees Famous was surely tagged out by the stun. And My God, rolling thunder as if foreseeing the victory.
victory in hand. 6-6 half tied up. यार राउंड निकाला भाई ब्रीच ने 1-on-3 clutch will. Having the mind to go back up on top of Heaven and Famous, trying to updraft or hop up, hovering through, getting that shot. He just couldn't find it. Yeah, I mean, oh man, the fault line as well. Sure, he didn't make the jump right away either. So the height not quite there, but the fault line all but secured that round. Now 6-6 half, and you kept mentioning it, Quack, and I think it's important to remind everyone once again, the most they had gotten was 4 rounds, 3 rounds in the first 2 maps. This time, they tied things up. The Des talked about it as well. Okay, Bleed always had this really slow start, and they figure it out once you switch sides. Well, this time, it's tied up. They only need 7 more rounds to go. And that's not all. It's the same as before. Now we will have Bleed on their defense. And there's so much that they can do. First of all, you have to be wary of Darian's operator. And like we mentioned before, right, same composition, sure, different players, different team. The stark difference between how Scary and Severine are playing right now. Severine a little bit too aggressive with his utility and how he positions himself as that controller player. If you lose that early in the round, you just don't have your smokes anymore. So needing to see that control coming out from Boom Esports. They have to make it happen. Are we going to rewrite this history book, or are we going to let it repeat itself? It's been 337 days since Bleed got knocked down to the lower bracket last year in the Last Chance qualifiers. Nearly a full year they've been waiting for this chance to get some revenge when it matters most. Sure, they beat Boom during the offseason in a couple third-party events, but this is where they want to prove that they deserve to get up to the big stage. Famous gets tagged quite a bit. He's gonna need some teammates to peek with him. Oh, the flash of the dash timing. Oh my god, yeah. Juicy with the fadeaway ghost headshot onto Famous. And they have to run away. They've all been flashed. Boom Esports, they're trying to do whatever they can. The paranoia comes through from Scary, but Blaze King not tagged by it. Only good for 1 kill. Scary now here with the Ghost as well. The site is flooded with players from Bleed, and they just do not let go of it. Bleed take yet another pistol win in the second half of map 3. Stu Blind fully committing down through A short as well as A long, and it almost feels as if Bleed were prepared for that first shot from Juicy and then just falling back. They worked out the information that they had. They were prepared, coming through so quick on the rotations. Yes, Boom, they got a bit of close contacts with the right clicks and the pistols, but still, Bleed having the numbers to trade it out in the retake. And we just saw it on the cameras of the players, but this looks the most relaxed that Bleed has been all night. And it's map 3, it's getting late into the night, and if this is when they're starting to heat up and get comfortable, that's not good news for Boom! Oh man, not even the Marshall duel going in favor of Famous. Juicy online, ready to go, trying to close things out. Oh, and he swings right around to A long to get yet another kill. And you called it, Quack. That smoke going down early, absolutely devastating on a map like Haven. You just no longer have any cover as you push into a site. You walk into C, and that's all that Killjoy getting contacted. Shiro will be able to shoot out the drone, but that's about it. Neff is now prepared for this. He's calling his entire team to surround the site. Blaze King lurk, but I don't know how much that can do. Yeah, trying to escape from the aftershock. Okay, Neff tried to get a read on it, but Shiro quick on the trigger. But can he make it across the sight lines of Juicy? He's pretty much trapped right now. Yeah, you're right. It's all up to Blaze King, but guess what? Crazy Guy has a read on that as well. Juicy good for 3 with a Marshall. Crazy Guy gets the flank, and everything that Boom Esports trying to throw in lead, it falls short of the finish line. Just not quite finding the answer just yet. Bleed having अब नहीं recover कर पाएगा भाई, बहुत deadly हो गया. Such a good read as well. Juicy doubling back out towards A long to find a second pick, and then in towards B site. Man, even getting that quick peek to the right after seeing the recombo, things like this, it just shows that Juicy is way more focused. Still though, full buys now coming out from Boom. And they're working their way around this, maybe trying to take it slow. Juicy wants to push up the tempo. Yeah, I mean, momentum-wise, carrying over from the end of the first half, it sounds like Bleed has the advantage. However, it's only an 8-6 scoreline, and in theory, right, the full buy round coming in for Boom
They should be able to try to turn things around here. The question is, how many weapons do they lose? Hopefully not too much. Working their way down A long. Juicy just repositions, recalibrates, and he's waiting for them to show up. Crazy guys here as well, and you know how useful those recon bolts can be. Yeah, they've already pushed out for Bleed on the side of C main as well, waiting to see if there is a rotate. And the recon bolt as well. The alarm bot gets cleared, and then Bleed backs off. They are still one step ahead strategically. Blaze King, if he gets this kill, it'd be huge. He misses the first one, and that allows the trade to happen from Scary. That's a rifle dropped. Wants to pick it up too, but attention drawn back. The paranoia now, Severine. Can you win out your duel against your counterpart? Yeah, the counter, paranoia as well. Severine gets the spray through the smoke, recognizes where it came from, but he does not realize there could be two. Neff hiding in between the smokes, Famous. He's doing what he can. He needs to keep hold of the site, and he will do so. Now, a 2v1 Marshall for Juicy, still full health and half armor for both Shiro and Famous. Swaps over the Spectre. Running gun possible here, but no, Famous will not give him the time of day. So, Boom Esports, they get the round they're supposed to, but the question, how many weapons do you drop? 3 full rifles. It definitely wasn't the cleanest round, I'll tell you that much, Will. And it all took so many rotations through, back and forth. Definitely a lot of presence being felt by Juicy, just up around the A long area. But also, when Scary is up around a corner, you have to watch out for that guy. And just knowing that he would have gone back for that weapon, Blaze King, a good pick off the start. He knows how to work around his utility when he gets that information, but you need so much more than that. You need to make it clean. Yeah, well, an early alarm bot down right in front of A lobby makes it seem like Boom Esports, they just want to commit to a fast hit onto A. Just in case. Oh, okay, spots the operator as well. So operator spotted, but not quite the Odin just yet. There's another expensive weapon. Okay, they start to hear it now on A shore. I mean, if you're Boom Esports, yeah, you gotta imagine, okay, well there's like 100 bullets on one side, and then there's 1 bullet that counts for 100. And at the same time, you got Neff slowly pushing up. He's under window right now. If they double back, he's gonna hear everything, Will. If they drop down, he's gonna get that perfect opportunity just to punish Boom. Boom, it looks like they might want to just try to fish for information on mid and then decide the timing. Can they get Neff? No, he gets 1 kill before Severine's able to get the timing around towards Garage. And that just means they still do not have full control of mid. Boom Esports starting to run out of options, running out of time as well. 40 seconds on the clock. You have to make up your mind. They try to throw a fake smoke, but guess what? No one's around to even fall for it on the C side of the map. Operator still watching A long. You've got the Odin watching the entrance from A short. I feel like they're gonna hit a brick wall, Quack. Oh, that's everything right there. Bleed already arriving on the crime scene. Yeah, and here's the Blaze Storm just to get prepared for a multi-person duel. Juicy, he gets the anti-flash as well. Fake TP. Yeah, but Severine with the fake TP picks up the kill, and Berserks will get the timing to come in for an extra kill. Open up the site, but it's Scary. You can never count him out. 1v1. Scary versus Shiro. They know of each other's position. Shiro with the Oh my god, yaar. holds true on his aim, and he will get the 1v1 clutch. How does he do this? Slight bits of movement back and forth, and as soon as he sees Shiro, despite the white swing through underneath the hell, Scary drags him down with him. 7-9 Bleed, very much so in the lead, and they're not looking to let go anytime soon, Will. And this is why Scary has such a huge following all around the world, right? Not just here in Bangkok, Thailand, but this is why he's been this feared player from all across Southeast Asia. And you can see it on the faces of Bleed. They're getting fired up. They're cheering each other on. They no longer look nervous. They no longer look under pressure. Meanwhile, we haven't even had a chance or a reason to look at Boom Esports' cameras during replays because they haven't been getting the clutch kills they need. Oh god, now Darren with a judge. Oh, well, he jumps right around, and that's just a way advantageous fight. So now with Judge to go with the operator. It's always something. Neff. They're starting to feel it. I mean, they are just in the mind of Boom Esports. For Bleed, it's really just another day where they're checking corners, checking smokes, but it's Boom who's not really quite being aware of those possibilities. And that's the thing. The players are starting to get too
nervous or too tense with how they go in for these fights, how they go in for control around the map. Bleed are exploiting this all in full. One more player down, Will. Yeah, and Neff also trying to draw attention from window as well. Yeah, they don't understand that Darian can still be here. Severine, yes, he tries to go for the check, but Darian already a step to the left, a little bit wide, away from that swing. Berserk. Judge OP or what? All alone, only one flash point. The fault line does come back, but there's 5 members on the other side. He gets spotted as well. Only 30 seconds, not much you can do. And Bleed now only 3 rounds away from climbing back forward, getting a rematch, potentially against Scars in the grand finals of VCT Ascension Pacific. And that's a match that they've won before. Off that 1 kill, Crazy Guy picks up another Hunter's Fury. And just in this round, yes, it is a bit of a save coming out from Boom, but you would have expected a little bit more success. The way that they re-peek back in the garage, you have to know that Darren's still here. What are you doing? You expect the coach to call a timeout right now because these players need it more so than ever. Well, it's coming through. The timer's paused. And boy, oh boy, we haven't really seen both coaches look this tense. All throughout this best of 3, it's always been, the side of Bleed looking so pressured, looking nervous that they might let things slip away. But this time, both teams feel the pressure. Sure, Bleed's in the lead, but they understand that Boom has the firepower to carry through. And at this point, sure, it's not overtime just yet. It hasn't gotten that far. But it is 11 p.m. here in Bangkok, Thailand, local time. The day started at 3 p.m. The crowds have been here supporting all the players on stage because you only get this one shot to move on. Take your place towards VCT Pacific. If you don't, your opponent takes your place instead. And then you gotta wait a whole year before you get your second shot. You don't want that to happen. Boom, it's now or never. And they're gonna have to try. 3 ultimates on both sides. And Bleed once more in control. You've got Juicy still on that operator. This time watching towards C-Long. Yeah, and he's not the one who's been needing to get the kills either. Neff with 20 kills to his name. Only 11 deaths. Still 6 assists as well. So doing whatever he can everywhere he can. Rolling Thunder and Hunter's Fury available for Bleed. Now with all the gunfire coming through, we do have Boom just being a bit more aware. So we're starting to see that change, right? They're calming things down. They're aware of the potential spam coming through. Okay. Nanoswarm cleared out. Famous tries to get the peek onto the Sova, but Crazy Guy will hide away just in time. Draws out a lot of utility. Are they going to recommit? Famous, no, he has to dash out before the tailwind expires. Yeah, it's just the B side. It's so easy to rotate around that they cannot recommit into this. If they did, it would have been a death trap. So rotations back on through now. They have a bit of garage presence, Juicy, fire shot, and now they have to play around this. They have a minute left. They do not need to rush this, and they correctly back out. And here's the thing, they've drawn out 2 huge ultimates from the side of Bleed. For the first time in Haven, it's actually Bleed who's getting a bit too flustered. They're trying to rush through with their utility. And Crazy Guy, he just wants to get 1 kill, but he holds the trigger for too long. Blaze King finds the origin. Oh, a nice sneak in from Darian, though. Are they aware that he's already here? They heard him. Yep, they heard the jump. What? He gets the kill onto Shiro, and he still stays alive. Well, that forces a lockdown to have to be used. Famous with a nice flake on the drop onto Juicy, as if he fell to his death straight from heaven. And Darian just trying to come around to get the lockdown, but he doesn't have the range to combat that Vandal from Blaze King. Once again, scary, but this time only 5 HP. There's no way he could have done that one. Boom Esports, the timeout was what they needed to get another round on the board. Multiple rotations, and it's not an easy one, Will, because it's so scary with how you actually peek inside of B, dodge back out, slightly in towards garage, and then all the way through over onto the A site. A tiny mistake, a tiny sliver, and you never know. Bleed might have punished you, but thankfully it worked out for Boom. With that, those ultimates drawn out, they managed to secure the A site. Still a little bit scary, though, because Darian got away with that classic kill? Yeah, I mean, the focus individually still on the side of Bleed, I would say, but team-wise, Boom's trying to recover and stabilize. Operator still available for Bleed. They have another round of full buys. Hunter's Fury trying to clear out one side of the map. But Severine, can he get the kill off the peak? He does. He clears out Scary. No smokes, no paranoia available. The fault line also gone from the side of Bleed. But Darian, he's alive once again. Terrorizing the site as he did last round. Holding back sight, and it's not a double peak. Darian good for 1. Blaze King finally trading for that one. Now a 1v2.
They don't know where he's coming from, but it is the operator. Oh no, the drone. Oh no, the timing. He jumps to avoid it. What? It actually just gives him a better sight line as Juicy goes for the flick. Oh, and he's baiting for it. I love it. He fakes out the gun drop, and now he's trying to spam. Oh, but he does not realize. Has to second guess himself, and it's Blaze King. Bye, boom. 1v1. Just a little bit more experience, knowing that he would make his move around the site, crouched down and waited. Sudden push out into C site, and despite that presence from Scary, this time Severine comes out on top. The shrouded step towards the backside, and then he gets the flick. Teammates here to back him up as well. Darian, almost a bit of a menace, but then calling out, you could see those communications coming through from the team. They were trying to spam and triangulate Darian's positioning. You want this team to continue to stay alive this way. Oh, and the round kicks off once again with an early fault line, and finally the credits burning out for Bleed. They cannot buy up the rifles they would want, only a Guardian in the hand of Neff. An early from the shadows just to clear out backside. They've always had trouble with that one over on C. And boom, they're finally starting to answer back. Checking every smoke, checking every corner. That's how Bleed was getting so many advantages throughout this map. The timeout has done wonders for this Indonesian squad. That's it though, Neff has the Guardian. He finds that first pick. So many angles, not quite yet covered by Boom. They have to go back. They have to play calm. And then the Rolling Thunder comes through. It does take up a couple players, so it buys a bit of time. Yeah, I mean, whatever to try to tie up the points. And Blaze King now with the timing. I like this fake out on the timing, right? The Rolling Thunder's not what he's trying to capitalize on. Oh no, but Neff swings out with the Guardian. Blaze King, you gotta get here quick, you gotta get here fast. Gets one, can't get the second kill. Down to Berserx. Berserx versus Crazy Guy. 1v1, holding to the half. Crazy Guy doesn't bite it. But no time, Crazy Guy has to get the kill right now, but it wasn't. Oh my! क्या मैच He दिखा did रहा what है. he had to do, tying it up 10-10. Still a little bit expensive, not quite the cleanest, but a win nonetheless. 3 in a row now, Will, and boom, they tie it up. Bleed, they still have timeouts, they still have options, and the crowd is counting on them. Boom, on the other hand, though, trying to claw their way back into this game. Still not quite the cleanest rounds, but they make it nonetheless. Once again, a 10-10 score line between these two teams. Boom Esports, they haven't had the lead for the past 11 rounds. Can they bring it back? Juicy spots Famous on that sliver. Famous says, I just want to back out. We don't want to commit too much utility. Blaze King's trying to shake up the middle of the site, but he cannot overextend because Neff's ready for this one. Oh, he lets Blaze King through. He can't quite get the first shot. Famous will survive. He's trying to just stay alive in the sky of B site. This time it's meant to be a committed plant here. The Aftershock not going to be able to push him off of it just yet. Famous not hit by the Paranoia. The lockdown. No one's ready to take it off just yet. They have to start exiting the site. Nice. Catches that timing to get 2 exit frags before the retake even begins. Shiro finds the gun barrel, but he can't find the second as Darion stops at nothing. Berserks, you have to buy enough time. Severine, exactly. They don't know where Severine is just yet, the Paranoia, but now they are quite well aware. Still enough time to start sticking that defuse. Even the smoke coming out. You cannot find that right angle. Severine, he's gonna get the kill, but Bleed will answer back. They should have more than enough time to close this one out once again. Keeping the lead 11-10. Unbelievably smart. You see how they play that 1-on-3. Yes, Severine was coming out from behind. They might not have known it until that Perno was sent out. But letting a weakened player go onto the defuse just to bait out for that shot through the smoke. So smart coming out from Bleed. They practiced for this. And given how aggressive Boom were onto the B side, it's high risk, high reward. And that time, because it was so risky, Bleed knew exactly how to punish them. Well, Bleed, the setup this time once again with an Odin and an Operator holding down A side, practically just letting them know A side is closed for the night. Please go to B or C, Boom Esports. Will they play by the rules? Even a dark cover, they just want to force them into C site, because guess what? A Rolling Thunder's waiting there. Juicy is pushing out. Okay, clears out the drone, but that's a bit of a warning shot for both sides of the team. Meanwhile, Darion looks like he got tagged up quite a bit over on by the C side.
Hands that Odin once more from Crazy Guy. Yeah, well, the throwing spots, not one, not two, but three in the middle of the map. He wants that reload because he thinks he's going to need 100 bullets ready to go. We've got a full minute to work with, and Boom doesn't quite have to commit to anything, but they are looking to punish Juicy. The crowd's starting to cheer up, and he backs off. Boom, once again, I mean, it's a little bit risky, but they're going in for it, Will. If they don't make it happen, that could be deadly. He tries to go for the first kill. He's trying to hold on to the site. It does buy enough time for his teammates to arrive, but Dark covers, cutting up the entire site. He's above them. They do not realize the Bladestorm's good. The Odin continues to grind to follow the members of Boom Esports, and it's only Famous left alive. Scary finishes it off. And Bleed will get to match point. I mean, just going in for it. Juicy backs up. We saw this on Pearl. Again, just the reads, and then floating up on top of them. Boom had no idea. Yeah, I mean, amidst all that chaos, just not quite aware of that updraft coming through. Doesn't have the awareness to do so, and that alone allows Crazy Guy to hold that trigger on the Odin. One round away for Bleed to finally get revenge in a tournament that potentially gives you that chance to enter a Tier 1 stage of VCT. The Rolling Thunder being used early here from Bleed. They see all the utility flying in, and they just don't want to have to deal with that. Now, they do still have the Hunter's Fury from Crazy Guy. So, not everything dumped early, but this is good news for Boom Esports, because guess what? Here's Famous, but he's been stunned up, and he can't get the first kill. They suspected it right away, and Scary's able to clear that out. Now without a jet, how do you plan to break open the site and distract this operator? Because Juicy's just waiting for a shot through the wall. Clips Severine, he is down now. No smokes, no entry. Blaze King doing what he can to disrupt the other side of the map, but they know the forces are here. He's been tagged. Resurge goes down. Shiro only with a Sheriff. Blaze King, you have to come back with that Vandal. You have to support your teammate. Oh, Shiro drops a spike as well. And Scary's waiting for Blaze King. And fate would have it that the hometown hero would get to play another day here in Bangkok, Thailand, in front of the home crowd as the last hope moving on to the grand finals of VCT Ascension Pacific. Finally redeemed. And it starts with this one guy, Scary, pulling it off on Pearl and then back onto Haven. Such a lead. Boom, not quite able to find those answers. Slowly making it out with some comebacks, but then towards the end of it, on the attacking half, the way that they try to find some of these gaps, some of these leaks, it just couldn't happen. Juicy with the operator, Crazy Guy with the Odin, the Killjoy utility to anchor down the C site. Yeah, Darion with great movements, right? Whether it was with the Judge or the Vandal, he's always ready for that second fight. He's not trying to get caught off guard. I mean, this entire squad, quite frankly, all 10 players that were on stage today, they play their hearts out. But alas, it is the end of the road for Boom Esports. They will not get to relive the moment from last year where they were able to send Bleed down from the upper bracket, make them lose their shot at the last chance qualifiers. Well, this time it's going to be Boom Esports who has to go home just a day too early, and Bleed, representing Malaysia and Singapore, including the hometown hero, the last reigning Thai player here at VCT Ascension Pacific 2023. They will be moving on to get a rematch against Scars from Japan tomorrow in the grand finals. And this time it's not going to be a best of 3, Will. We will have a full best of 5. Limits will be tested. And you're just going to have to think about it, right? The Pearl map being picked out. Fracture perhaps another run back. But so far, the story being written inside of Ascension Pacific, the first one of its kind, 2023. And you just see Boom play their hearts out, trying so hard, so darn hard. 2 leads on the first 2 maps, and it all crumbles away on the last one.
for Bleed, if you're a supporter of Bleed, I think the promising moment today, sure, it's Scary who ends, who puts down that period at the end of the sentence of both map 2 and 3. However, it was a lot of these other players that started to shine. Neff with a great scoreline, some amazing clutches as well. I mean, we saw Crazy Guy continuing to put up crazy numbers and support. Darion, of course, we've always talked about his potential, but he does it once again on that Killjoy. Juicy not missing a beat either. I mean, every single one of these players, they were able to carry on through and bring home the victory to play one more day in Bangkok, Thailand for a chance to take their place in BCT Pacific. And without a doubt, a great effort from Boom as well, right? I mean, they came in prepared. They came in and showed us what they had for those first 2. प्लांट कर दे कोई नहीं है बेटी दोनों बी थे Are you sure? Yeah. आएगा तो मेन देखना नहीं कोई नहीं पान खाए सैया सिटी आ रहे दोनों सिटी Match point. Let's end this. I'm out of here. Be overstaying his welcome in garage, but the important bit is what actually happens afterwards. So when we do look at the radar, आओ चलो मिड से जाएंगे जहाँ मन करे उधर going into that smoke from his team, and that यहाँ होता है बंदा शॉर्टी के साथ होगा शॉर्टी बड़ी राइट से कर रही है थंबनेल तो लगाया है You ain't coming back, bro. You ain't coming back. We just gotta grind for that paycheck. Mama told me one day I'll be famous. Remember when she used to say she hated back then it would die when I say shit. Now I'm inside all them one day I'll be stalking on those stages. But right now we just dancing in the basement. In the basement singing la 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 la. Hey that draw. Shawty give me talk. अरे पास हमने मस्त है क्या बोलते हो नोआ भाई व्हाट्सअप ब्रदर कैसा है मेरा भाई क्या चल रहा है ओप्स फाउल व्हाट्सअप ब्रो व्हाट्सअप कैसी रही आज की स्ट्रीम केओ मेन मैं वहाँ स्ट्रीम करने की कोशिश है मतलब अच्छा मतलब स्ट्रीम स्टार्ट करने वाले हो अभी ऐसा कैसा क्या हाल चाल है मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो
How is you यार doing? सैटरडे संडे कुछ अलग किया करो यार। नो भाई तुम रोज Okay, सब बढ़िया। मंडे टू फ्राइडे वैलो खेलो एंड सैटरडे संडे कुछ डिफरेंट गेम खेलो। अबे यार मैंने पास की दिया। क्यों भाई यार मैं आज तो देखा था यार स्ट्रीम कर रहे थे तुम। क्यों का फोटो वोटो डाला था। स्ट्रीम क्यों नहीं किया वैसे? क्या चंकी भाई का नाम क्या था? पनिकेट क्या है? ये फर्स्ट गोल मेरा सेव किया बट एम्बाप्पे ने बचा लिया। उसी के साथ ये राहुल का हमारा भाई। मंडे टू फ्राइडे वालो एंड सैटरडे संडे अलग। एक दिन अगर ना खेलूं वालो ना तो एम चला जाता है पता नहीं कहाँ। अच्छा है हाँ कर रहा स्ट्रीम बस हाय बोल। सही है भाई कर दो भाई स्टार्ट कर दो। क्या बोलता नया गेम खेलना है तो बताओ यार। सिटी पैसिफिक से देख रहा था ऑन स्क्रीन हैं चल रहा है क्या? किसका मैच है? पता नहीं यार ये लोग कौन है। नो भाई स्किल्स हो तो एम कहीं नहीं जाती घंटा। सही लगा यार पीछे का। कैसा मारा ना अच्छा सोचा था डायमंड करूँगा भाई मैं और अब रियल लाइफ ग्राइंड मांगता है भाई। तेरा अब भी डायमंड होगा पता है। तो जितना कम गेम्स खेलेगा ना उतना तेरे लिए अच्छा है। सोच तू दिन के 2 गेम्स खेल रहा है और तू दोनों जीत रहा है ठीक है। ऐसा ज़रूर नहीं कि रोज़ 2 जीतेगा। तो स्ट्रीम भी नहीं करता है तो रोज़ ऑफिस से आने के बाद 2-3 गेम खेला कर। उससे क्या है 2 जीता 1 माइनस हुआ। और तू अगर रोज़ खाली बैठ के तू अगर हम लोग जैसा ग्राइंड कर रहा है तो ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि तू 7 खेल रहा है 7 में से 2 जीत रहा है और बाकी के 5 हार रहा है तो कुछ फ़ायदा नहीं उस चीज़ का समझ रहा है। ब्लीड फाइनल्स में पहुंच गई बूम हार गई सेमीफाइनल्स। तो फाइनल्स अभी किसके साथ है? वो स्टिकर अमेज़न से लिया सस्ता है हाँ क्या यार मेरे को ना यहाँ पे परमिशन नहीं है यार मेरे वॉल का मतलब पेंट का परमिशन नहीं है वरना मेरे को वाइट ऑफ वाइट पेंट करना था यार। और मस्त कुछ ऐसा लाइक लोगो वगैरह लेना था यार मेरे फेवरेट टीम का। सोच रहा हूँ अभी वॉलपेपर लगाना पड़ेगा यार। वॉलपेपर लगाओ कोई मैंने किल स्टोरी में टैग किया था पर किल स्टोरी में टैग किया था हैं नहीं आया भाई मेरे को। वॉलपेपर लेना है भाई। हाँ भाई कल कुछ खेलना है क्या? तुम्हारे पास गेम्स ही नहीं है। गेम्स है कौन से गेम्स है तुम्हारे पास बताओ।
अच्छा तूने अनफॉलो किया था ना तभी, और मेरा प्राइवेट इधर है, प्राइवेट आईडी है तो दिखता है भाई, स्टोरी मेंशन करेगा तो दिखता है भाई। ओ भाई गोलकीपर वॉकर मेसी आया है सामने, दिखाऊंगा हूँ इज रियल गोट। हाँ भाई पहले का लग रहा है मेरे को। ओके साहब, बारिश का मजा ले रहा है या नहीं? मैंने 3 साल बाद पबजी खेली है, एस पहुंच गया। ओ भाई के सब भाई, तुम तो जॉर्ड निकले यार। नाइस यार डेविस। दे 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 पास दे। यार मुझे ऐसे लोगों से गुस्सा आता है यार जो पैर में बहुत टाइम तक बॉल रखते हैं भाई, एंड जस्ट कीप पासिंग 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 पासिंग। एंड टू एंड गेम करो यार, मैं अटैक करूंगा फिर तेरे पास बॉल आएगा तू अटैक कर। गेम इंटरेस्टिंग बना, बोरिंग मत बना। चलो फुल बजे आज सुबह सुबह मस्त कॉफी पी और साथ में पापड़। पापड़ अच्छा, सुबह सुबह ना, सुबह सुबह ना। वो भी एक फुटबॉल है जो खेलते हैं वो लोग पोजीशन बेस्ड, बट भाई आएगा क्या? ऐसा पापड़ देगा इतना पतला। हाँ fuck you man। मैंने फेक शॉट किया था, मेरे पास सब स्टोरी मोड है। स्टोरी मोड क्या है भाई? पीवीपी बोल रहा हूँ, पीवीपी या फिर ऐसा गेम जो मल्टीप्लेयर खेल सके। देखो क्या है ना, फिर लाइक बकचोदी हो गया यार, समझ रहे हो? नो भाई बकचोदी होगी, कंटेंट निकाल पाएंगे साथ में, कुछ वीडियोस साथ में, मैं तुम्हारी मारूंगा तुम मेरी मारना, हंसी मजाक होगी, समझ रहे हो? यही कंटेंट मिलेगा तो लाइक आई लाइक हाफ कुक पापड़। अच्छा शॉपिंग जाना था और घूमने। स्टोरी मोड अकेले में खेलने के लिए मस्त है यार। बारिश की वजह से नहीं भाई, क्या बारिश हो रहा था सुबह, मतलब खतरनाक बारिश हो रहा था, मजा आ गया। पड़ेगा पब्लिक में दिखता, प्राइवेट में नहीं दिखता, नहीं दिखता। अरे हाँ क्या? अरे स्टोरी दिख जाती है भाई, मेरे को मैसेज तो आएगा ना कि तू स्टोरी वो किया है, मेंशन किया है। अब पार्क द बस करना पड़ेगा क्या इसके सामने भाई? अरे यार अगर ये बेकर तेरे साइड से बॉल जा रही है ब्रो, बता फिर कौन सा गेम लेकर रखूं? फारलाइट खेल सकते हैं भाई साथ में। फारलाइट बहुत बकचोदी वाला गेम है भाई, फन गेम एकदम, बैटल रॉयल गेम है। मैंने एक वीडियो डाला है फारलाइट का। अरे दिखता बद्दू, तभी तो मैं पूछा प्राइवेट में नहीं होता। फिर मेरे को आइडिया नहीं, मैंने कभी लाइफ में अपना चैनल प्राइवेट नहीं किया, चैनल बोलो अकाउंट।
क्योंकि कुछ है ही नहीं भाई छुपाने के लिए, प्राइवेट करने के लिए क्या छुपाए बताओ। ऐसे भी नहीं है कि गर्लफ्रेंड के साथ फोटो लगता हूँ लकड़िया वकड़िया के साथ, तो जो अकाउंट प्राइवेट कर लूँ। बैक हिल देना यार मॉडरिच को भाई, फुटबॉल सिखाओ क्या एम्बाप्पे अभी तेरे को? दोनों लोगों को फॉलो करना जरूरी है। अरे वो तो clear favorites. This team is going to win. That was the case for them during the अरे हाँ यार ओनली आप खेलो आप यहाँ पे मैं ओनली आप यार मेरा बीपी हाई हो जाएगा, समझ रहा है, पागल हो जाऊंगा मैं। तो जो सब बोलते रहे कभी मेरा टेबल टूटेगा, टेबल कंफर्म टूट जाएगा भाई। समझ रहा है एल्डन रिंग में कितनी दिमाग की दही हुई थी, देखा था ना। बेहतरीन। ये कैसे होगा? यार ये कैसे होगा? ये यहीं से होगा ये। यार ये कैसे होना है यार? ये तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा क्या एंगल है उसका। इसकी माँ की बहन चो लौड़े लसन। अबे यार टेलरिंग कंप्लीट हुए भी 6 मंथ से ज्यादा हो गए। हाँ ना यार, करना पड़ेगा कोई एक गेम कंप्लीट अभी। ओनली अप ले लूं क्या? ओ ये दुख दर्द और पीड़ा। अरे यार भाई ओए लेफ्ट वाली पे ये अच्छा काट में ऐड कर लिया ना, दीवार बाद से में टक्कर खरीदूंगा। लग के जाएगा वो। अच्छा ये भी चूतिया पा है ये। अच्छा ठीक है समझ गया। सर को बोला था मैंने सकीनो यार, गाड़ मार ली भाई। तो खेल सकते हैं सैटरडे संडे, क्या बोलते हो? अरे चलो फिर कल खेलते हैं। अरे बहनचो अरे यार ये फ्लाईओवर खत्म कराओ यार। बहन से 2 बार मैं ऊपर पहुंच गया हूँ यार, 2 बार भाई। कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि डायरेक्ट वहीं से चालू होना चाहिए ये। अरे यार इस यार क्या बोल रहा है यार, नहीं हो रहा है यार। उसी समय भाई 1 घंटा से बैठा ये। मेरी फेवरेट है।
अपने आप आपने अब तक नहीं क्या करूँगा 200%। नाना कोई भी गेम खेलता है पूरा चाट जाता है उसको, लाइक एक मूवमेंट याद आ जाती है। अच्छा ऐसा है क्या? बाल वाल बचा भाई। अरे यार अरे यार यहाँ तो ऊपर चला जाता है, यहाँ तो नीचे चला जाता है, क्या मजाक है यार ये। वाह भाई nice, very nice, let's go, nice. What is this behavior? Man choose. भाई बोली अब मैं उनको ये तक याद हो गया था कहाँ फंसे गाने। अच्छा अरे माँ कसम यार क्या ही बनाया बे। What? Hello? Hello? के टके। ओ भाई कसम से यार मैं थक गया भाई, मैं सड़ गया अंदर से भाई, मैं टूट रहा हूँ मैं अंदर से भाई मैं टूट रहा हूँ। बहुत जगह पे ग्लिच है भाई मेरे बस की ना हो रही है पे। कभी ऊपर जाके वो दिखा रहा है कि यहाँ से यहाँ पे ले लो, वहां से वहां ले लो। भाई क्या मजाक है ये, कुछ है क्या? पनौती की सही बात है, पनौती है ये। अरे मनुष्य को लेके आओ पहले, आरजीबी को लेके आओ। कुछ तो मनुष्य चाहिए हमें, क्या पता हमारे लिए मनुष्य तो उल्टा काम करे। एक मनुष्य तो उल्टी। को याद ही होगा कौन से कहाँ से बेड काउंट करने, मैं उसका टेंशन ले ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यू आर काउंटिंग फॉर मी। भाई मुझे क्यों लग रहा है गिरने वाला है ये। It's really good to see my 2-1 frame. Let's go. Cement. चलो गेम कंप्लीट, लेट्स गो। हेलो अरे नीचे क्यों जा रहा है? हेलो बहुत अच्छा खेले रॉकेट में, बहुत अच्छा खेले।
इसको शर्म आ रही। अबे क्या हो गया? साफ कर रहा हूँ ये गंदा। वनलिया भी खेल डालू क्या? रुको, वनलिया पे आज अभी खेलता हूँ वनलिया। अभी रुको, करना क्या था? अभी खरीदता हूँ। कार्ड किधर है मुझे? व्यू कार्ड किधर है भाई? भाई तो ऐसा बताना होता है ना भाई, मेरे को थोड़ी मालूम है भाई। माय गॉड भाई। भाई देखो यार, ट्रोल करो चलेगा, लेकिन यार ऐसा भी मत करो कि गरीब इंसान वापस नीचे आ जाए। क्या मैं इस घर में जाऊंगा तो ये घर उड़ेगा और ड्रोन से ऊपर उड़ेगा? मुझे क्यों लग रहा है कि मैं फिर नीचे जाऊंगा। कहाँ जम करना है, कहाँ जम करना है, कहाँ जम करना है? चैट बताओ कहाँ जम करना है। वो पुलिस। कहाँ जम करना है ये तो? प्लीज टेल मी कि ये इजी रास्ता था और तुम लोग मुझे वहां मेहनत करवा रहे थे। ऐसे बेहरे रहे हम लोग हो भाई। इधर रास्ता। वाह, एरर हो गया भाई। अरे सही लंबा है। चढ़ना पड़ेगा पर इजी होगा ना। हाँ, क्या बोल रहा है? इट्स रियली गुड टू। ओके, हंस क्यों रहा है बे? Why do I have a feeling कि ये विंडमिल मेरे को ओके। तुम्हें पता नहीं, बहुत बड़ा प्रो प्लेयर हूँ मैं इन सब। फोकस फोकस फोकस। टूटेगा 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 टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। क्या ये गेम है 5 मिनट नहीं खेल सकती? क्यों? पागल औरत बहस की आग।
भाई क्या चल रहा है ये? If a man does not know which port he is sailing to, no wind will be a tailwind. After watching, thank you, Sakura. I hope you like it. Make sure to drop a like. यही करना है ना? यही कूद गया। क्यों भाई क्यों? और ये हार्ड वाले जंप्स पे आया हूँ मैं। क्या बकचोदी है ये? हेलो हेलो भाई क्या कर रहे हो? एक मिनट रुकना। मैंने नीचे नहीं जाना है कि तुम्हारा नाम लो, ऊपर जाना है और ऊपर जाने के लिए रॉकेट ही बेस्ट होता है। अबे क्या हो रहा है ये? दिख नहीं पा रहा हूँ भाई। ऐसे लकी तो है बंदा तेरे लिए।
कार्ड यूज करके देखते हैं। वो नूब हेलो हाँ हाँ हेलो आवाज आ रही है? कहाँ चला गया? अरे मैं हाँ बोलो। आवाज ही नहीं आ रहा तुम्हारा। क्या गेम ले रहे थे? अरे अब आ वन रही लिया। है? आ रही है क्या? अरे अरे अभी आ रही है? आ रही है। हाँ मैं कह रहा था क्या खरीद रहे थे? अरे मैं वनली अब खरीदने का कोशिश कर रहा हूँ तब से। अच्छा हो ही नहीं रहा क्या? ना भाई स्टीम में वो डिनाई नहीं करता पेटीएम। क्या हो रहा है? डिनाई डिनाई डिनाई। पेटीएम से नहीं हो रहा है, कार्ड से कर दो। अरे कार्ड क्या बोलूं तुम्हें मैं। हाँ वो वनली अब खरीदने का कोशिश कर रहा था मैं। नहीं है नोआ भाई, 3-4 हफ्ते में डेड हो जाएगा गेम, उसके बाद ऑब्वियसली हो जाएगा यार। वन टाइम वाला गेम है यार ये, थोड़ी है कि बार बार लोग खेलेंगे। कौन सा गेम खेल रहा था? अभी तो कुछ नहीं खेल रहे हैं। नोआ भाई खेल रहा है, मैं भी नहीं खेल रहा अभी यार कुछ भी। मैं तो अभी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ के आया हूँ। मैं अभी आया 5 मिनट में, फिर देखते हैं क्या वैल्यू खेलूंगा मैं। मैंने माइक चेंज किया है, ठीक है क्या? माइक मतलब हेडसेट ही पूरे चेंज किए हैं ना, तो माइक चेंज हो गया। सारी पेमेंट डिटेल्स तुमने देख ली मेरी। ओ अनूप हाँ हाँ बोलो बोलो। क्या हुआ? अरे स्ट्रीम देख रहा था आपकी। मेरी स्ट्रीम?
किसकी स्ट्रीम देख रहा था? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही है। किससे हेलो। बात कर रहे हो भाई? किससे बात कर रहे हो? अबे भाई मैं कंफ्यूज क्या? हो गया स्ट्रीम और इसके बीच में यार। लॉजिक कंफ्यूज हो गया मेरा एकदम। वाह, मेरे को लगा किससे बात कर रहा है भाई। वैलो खेलोगे क्या आप? वैलो खेलना है, खेल लेंगे यार। हेलो हेलो। बोल रहा हूँ खेल लेंगे, क्या दिक्कत है? खेल लेंगे, खेल लेंगे यार। ओनली अप नहीं हो रहा क्या आपका? तुम नहीं खेलोगे, तुम लोग तो ओनली अब खेल लेंगे। मैं तो कैसे खेलूंगा वैलो? मैं तो नहीं खेल पाऊंगा। क्यों वैलो? वैलो क्यों नहीं खेल पाओगे? अरे मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। क्यों? अरे भैया फिर क्या करूंगा, खेलूंगा इतना टाइम नहीं रहता। हाँ ये तो है यार, ये बात तो तुमने सही बोल दी भाई। टाइम बहुत बर्बाद होता है। बहुत ज्यादा। इसलिए अभी फ्री हुआ हूँ तो अभी आ गया वीसी में। मार वार पड़ी है क्या घर पे? नहीं नहीं, टेस्ट में नंबर कम आ गए हैं। अच्छा तभी। नहीं तभी। तो घर पे तो कुछ नहीं कहते, पर वही बात है भाई, पढ़ाई लिखाई तो करनी पड़ेगी। सही बात है, करो फिर तुम पढ़ाई। डाउनलोड पे लगाया मैंने ऑलरेडी अब। ठीक है भाई, मैं जाता हूँ। ठीक है, ओके बाय बाय। तो सही, यही से लग रहा था।
हाँ भाई तन्नानी नारे 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 ना हाँ भाई कुछ तो बकचोदी करते हैं हो गया कोई लॉन्चिंग है ओ वो कहाँ है यार वो कहाँ है इसका मूवमेंट WASD स्लो वॉक लेफ्ट माउस है स्लो वॉक लेफ्ट माउस स्लो मोशन राइट स्प्रिंट से शिफ्ट शिफ्ट से स्प्रिंट स्पेस से जंप है क्राउच कंट्रोल से है कंट्रोल से क्राउच फर्स्ट है शिफ्ट जंप ओके चलिए शुरू करते हैं ये जंप है Don't look up. और ये स्पीड We जंप need to है get ठीक to है the top. I'm sure we'll नाइट make मोड it. सून I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. छोटे के कंधा पे चढ़ गया मैं ये क्या 36 37 ओ भाई उधर देख क्या चल रहा है पर नहीं जा सकते बात करती है ये सब इधर भी वॉल इधर भी नहीं जा सकते
जाना किधर है लेकिन? इधर भी वॉल है, इधर भी वॉल है, इधर भी नहीं जाना। ओ उधर जाने के लिए था। इधर भी वॉल है, जाना किधर है? इधर भी वॉल है। हो गए हम लोग भाई, गेम की शुरुआत में अपन सो गए। अब वक्त हो गया तो फिर जाना किधर था? उधर जाना है। यार ओ उधर जाना है। ये किधर फंस गया मैं? अबे सही। It's very hard to make a choice when you don't know where it will lead. वेरी मोटिवेटिंग। भाई इधर से तो मेरे को डर लग रहा जाने में। भाई अपने मन से जा रहा है क्या? अरे भाई इतना तेज क्यों चल रहा है ये? लेकिन हाँ बैठ के चल। वेरी गुड। माउस सेंसिटिविटी ज्यादा नहीं मेरा यार, बहुत कम रखा है, फिर भी ये हालत है मेरी। और मेरे को तो डेंजर लग रहा है लाविडू।
बैठ जा भाई मेरे। वो क्यों लग रहा है कि मुझे उधर जाना है, वैसे वैसे उधर करके ऊपर से। तो तेरा भाई है ना अभी। अभी तेरा भाई चला जाता। इधर से चलते हैं ना। भाई तन ऊपर आ गया हुआ है। इधर से चलेंगे। रिस्क ले रहा है अपन बहुत गंदा। अबे ये कहाँ आ गए हम लोग? इधर से तो कोई रास्ता ही नहीं है। कसम। देख रहा तेरा बाहर रिस्क ले रहा भाई, तेरा भाई भाई फुल रिस्क, रिस्क बाजी में जी रहा भाई। भाई देख तू फिसल क्यों रहा है? खुद से फिसल रहा, मैंने कुछ किया मेरे। चढ़ क्यों नहीं रहा इस पे? अबे कहाँ जा रहा है? भाई क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है। Okay.
इधर से ऊपर जाना है ना। भाई गिर मत। मेरे को ऐसे धक धक हो रहा है। There is something strange going on with this world, though there has always been something wrong with it. What everyone clung to, the stability, has been shaken. Maybe this is a chance for me. और इतना तेज क्यों दौड़ रहा है ये बता मेरे को। तो मैंने बोला इतना तेज दौड़ने को। भाई खुद से ही तेज दौड़ने लग रहा है, हद हो गया भाई। इधर जाने का क्या? उधर इधर If you want to go quickly, go with friends. If you want to go far, go alone. Let's go. Holy shit, right? From here, you have a great view of the favelas. This is where everyone Boy, lives in full Shimla lag poverty, raha which is hai hard to get out of. This is where my whole life and the lives of my goddamn parents have been. Boy, jump lane la, jump lane la. पर वहां जाएंगे अपन। वाह कोशिश कर रहा हूँ मैं ओनली अब खेलने का। हाथी है यहाँ पे।
many like you, you have to be with them and not stand out. You won't make it. You're a weak kid. Go back to the favelas. Your friends are there. Your destiny and life is there. Holy shit! ये तो अपने मन से दौड़ रहा है भाई। हैं? अबे सालों बाद नया कुछ गेम यार। To get to the new one, you first have to make a jump and get off the ground, not knowing what the future holds. भाई अपने मन से ही दौड़ रहा है भाई। ये एकदम नया है यार, ये देख रहा मेट्रो एकदम नया था ये। खुद अपने मन से क्यों दौड़ने लग रहा लेकिन। My father worked here as a driller, and he always smelled of fuel oil. I was afraid of him and hoped that one day he wouldn't come back from work. He drank a lot and often beat my mother and me, but that's in the past. You'll never make it to the top. You'll never make it. You bastard. Oh, I'm still scared of him. जब आप इसको और इसकी माँ को मारता था यहाँ पे, भाई भाई डर लग रहा है इतना ऊपर। ऐसा लग रहा है मैं ही चल रहा हूँ धीरे धीरे। डेंजर जगह है बे, है ना? विकेट लेने का है क्या? 4 दे नहीं लेने का। डेंजर बैठ था भाई। मेरे को नहीं देना बेड। भाई बच गया मैं।
बाल बचा। सीरियसली भाई, ओह अभी मैं नीचे जाने वाला था। Some say that soon no one will need oil, but it is unlikely to happen sooner than in 20 to 30 years, and meanwhile oil is still a resource that people kill for. जाने का किधर है मेरे को बिल्कुल नहीं पता। ओ भाई इसमें तो नहीं लग रहा कि अपन चढ़ पाएंगे। वो चढ़ पा रहे हैं इस पे। आई थॉट नहीं चढ़ पाएंगे।
होले शेर भाई अभी ओए मीनू गेले अपन ओ ओ माय गॉड यार सीरियसली भाई फुल धक धक होने लगा मीनू Seriously? Oh my god! Oh my! Seriously, भाई. This is shit, bro. अपने को बेड लेना ही होगा. Oh! बेड लेना ही होगा ब्रो और कोई उपाय नहीं है ओ ओ सब यहाँ का वो पकड़ नहीं पा रहा हूँ मैं यार वहां पे जो है ना उसको नहीं पकड़ पा रहा हूँ मैं ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है यार ये है ना वो पकड़ लिया मैंने नाइस That's all. What? Birth, kindergarten, school, army, institute, factory, death. Hello, Kindergarten है ये kinfolk. बेड भाई लिया सही था सीन सही था पकड़ ले भाई ओ भाई
बहुत ऊपर आ गया मैं। भाई देगा क्या? मेरे को लग ही रहा था इधर जाएगा ये। तो कैसे कैसे बच रहा हूँ मैं, मेरे को ही पता है। मोबाइल चढ़ जा। Oh. Holy shit! Die! अबे सही समय में दिमाग लगाया, ज्यादा दूर नहीं गिरा मैं। एक तो जब ये गिरता है 2-4 बार दौड़ जाता है खुद से, हद है। ऊपर से गिरा हूँ मैं, वहां से गिरा हूँ क्या? नहीं वहां से गिरा हूँ मैं, नहीं वहां से गिरा मैं। अन्ना नहीं नारे 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 हो गए भाई ये। Oh yes yes, ड्रोन बच गया मैं, और नीचे लटक जाता मैं अभी तक।
If a man does not know which port he is sailing to, no wind will be a tailwind. Holy shit, भाई. टूटा हुआ था बीच में, देखा क्या? नहीं बच गया भाई. जाना किधर से लेकिन? ओह बेट. किधर जाने का है? कर ही नहीं पा रहा मैं. यहाँ पे ये तो खुद से दौड़ रहा है. इधर जाना है क्या? Holy shit, bro. बच गया रे बाबा. बाबा बच गया रे धीरू. बच गया रे बाबा. क्या सरदर्द गेम है भाई. वाह. Broken lives here in pursuit of their dreams, but only a few have been lucky. Your child is बैठ देखा जाने को इधर. ओ लेकिन लेकर जाएगा किधर? Holy shit भाई. My God यार. ये सीधे स्किप बटन हो गया भाई ये तो भाई.
चला जा भाई, बच गया। वाह, क्या हाल चाल है कराची का मत के रैक भाई, वेलकम। पकड़ ले रे बाबा। What really भाई, literally भाई, रैक भाई। भाई ये क्या बकचोदी है। बाइक पे खड़ा हो गया क्या ये? मेरे को तो लगता खड़ा होगा। नहीं भाई, ओरे शिट, पकड़ भाई। क्यों नहीं हो गया ये? अरे यार, क्या सही जा रहा था मैं। सीरियसली भाई। ट्राई कर, मस्त गेम है। मतलब जितना हाइप है ठीक है, उसके हिसाब से तो ठीक ही लग रहा है अभी तक फिलहाल। ये जो लटक रहा है ना पकड़ पकड़ के, उससे डर लग रहा है ज्यादा। In pursuit of their dreams, but only a few have been lucky. और बताओ राक भाई के क्या हाल है? क्या कर रहे राक भाई आजकल? भाई पहुंच जा। Let's go. भाई 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 भाई, कूदते कूद गया ये। पहुंच जा मेरे भाई। वाह, पहुंच गया यार। इस बार मैं ऊपर से ही जंप लगाऊंगा, बाइक के चक्कर में नहीं रहूंगा मैं इस बार। नो बाइक बाइक जाओ। भाई बच गया।
What the fuck? कहाँ गया मैं? किधर से जाना है? Holy shit भाई, किधर आ गया मैं यार? ओह, बेड है, मेरे को दिख रहा, बेड दिख रहा उधर। भाई वहां से गिरा हूं मैं, हद हो गया भाई। प्लीज मेरे को अच्छा जगह लेके चल बेड यार। भाई अबे तू तो यही गिरा रहा मेरे को, क्या मकसूद बेड है ये? भाई क्या कौन बेड दिख रहा है? कौन कहाँ लेके जाएगा भगवान जाने, उधर लेके जाएगा मेरे ख्याल से। भाई नहीं 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 नहीं। उधर नहीं जाना है, बहुत अंधेरा है इधर। सबसे रास्ता है। इधर इधर तो टफ लग रहा भाई। समझ रहे हो बीर, डब्बे से डब्बे करके जाना है उधर, डब्बा डब्बा करते हुए। बार इससे ग्रिप बहुत खराब है जूते, नया जूता दिलवाना पड़ेगा इसको। भाई खुद से कूद रहा है भाई ये तो। मेरे को कोई जल्दी नहीं आगे जाने का, ठीक है? इस गेम को खेल के कुछ नहीं। अबे कितना ऊपर से गिरा हुआ है, वहां से गिरा हुआ है।
भाई कुछ पकड़ लेना भाई, भाई कुछ तो पकड़ता। कहाँ से कहाँ जाना, लेकिन पास पहुंच गया था मैंने पर जाने पे। पूछ सकता हूँ जाने के लिए। लेट्स गो। वाह, पीछे आ गया मैं, समझ में आया क्या? उधर से नहीं जा सकते अपन। अबे क्या पक्स हो रही है यार। किस गली जा रहे हैं, यहाँ पे गाना है। इधर से है रास्ता। नाइस भाई, भाई ये डेंजर है भाई, ये डेंजर है भाई ये। नहीं 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 नहीं, अबे रुक जा भाई मेरे यार। डेंजर है, सीरियसली डेंजर है भाई। ये नीचे खड्डा दिख भी रहा इधर। जाना किधर था? इधर से इधर जाना। भाई नहीं नहीं, पांच 5,000 रुपए गिर चुका हूँ वहां से। इस बार यहां से गिरूंगा क्या? बच गया भाई। डायरेक्शन थोड़ा गड़बड़ रख रहा है ना, थोड़ा अच्छा डायरेक्शन रखना पड़ेगा वहां पे, फिर अपन आराम से उधर लैंड कर सकते हैं। हाँ ये पकड़ लिया ना इसको।
अब यहाँ से वो जंप लेंगे ना हम लोग जिसने जो कभी किसी ने नहीं लिया होगा। नहीं, ये जंप नहीं लेना था मेरे को। हे भगवान, इतना दुख, इतना दर्द। ऐसा लग रहा है इतने ऊपर से नीचे गिर रहा है। घूम फिर कर मैं इतने ही दूर में घूम रहा हूँ उस समय से, समझ रहा हूँ ना, इतने ही दूर में सर्कल काट रहा हूँ। बदल के खेलना पड़ेगा मेरे को। अबे मैं डायरेक्ट इधर से तो जंप कर सकता था सीधे, मैं बार बार उस कार पे क्यों जंप कर रहा था? आने ओ बच गया मैं वहां पे। नहीं, अबे दौड़ के कहा जाएगा? होली शिट भाई, हाँ वहां कैसे गिरा मैं, लेकिन वहां पर गिरना पॉसिबल भी नहीं है। अरे यहाँ से भी गिरेगा क्या यार? मैं मकसूद कैसे हो गया? नहीं यार नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं। अबे कहाँ जा रहा है? भाई इधर मैं 50वां बार आ रहा हूँ, 50वां बार। But only a few have been lucky.
वो नीचे चला जाता। भाई इधर से मैं किधर कूदूं? कहाँ पे? पकड़ ले! भाई पागल हो जाएगा मैं। ये मेरी बेबसी वाली हंसी है। अबे नहीं, क्या दुख गए मेरी। अरे नहीं भाई, नीचे क्यों जाना चाहता है भाई, क्यों? फंस गया मैं। कूद नहीं पाया। मैं कूद जाऊंगा वहां पे, लेकिन कूद नहीं पाया मैं वहां पे। You have been lucky. इस बार मैं बहुत धीरे धीरे खेलने वाला हूँ वहां पे जहाँ से मैं बार बार गिर रहा हूँ। इस बार मैं इस पे कूदूंगा। Holy shit! फाइनली मैं क्रॉस कर चुका हूं यहाँ पे। लेट्स गो।
देखो बेड दिख रहा है मेरे नहीं, वो पकड़ लिया यार, मैं जंप नहीं कर पाया था वहां पे। लेट्स गो, कहीं तो पहुंचा हुआ अच्छा ही लग रहा है। वहां पे एक और ये दिख रहा है मुझे। हेल तो कुछ भी नहीं हुआ। भाई बहुत बग्स है इस गेम में। क्या बकचोदी थी यार ये, अरे शिट भाई, क्या बकचोदी थी भाई ये। कहीं से भी मैं गिर गया भाई, कहीं से भी मैं गिर गया, सीरियसली दैट्स वेरी सैड यार। सीरियसली नहीं भाई, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे लिटरली। नहीं इधर पांच करोड़वीं बार मैं इधर से जा रहा हूं अभी। एक वहां लगा था कि मैं आराम से निकल जाऊंगा, दौड़ते दौड़ते सीधे नीचे गिरा हूं मैं। कैन यू बिलीव इट? सो देगा लेकिन कहां से मैं नीचे को होगा, समझ रहे हो? बाइक को पकड़ना है। ओ कितना अच्छा बेड पकड़ के मैं ऊपर गया था यार, किधर गया था मैं?
जा ही नहीं पा रहा, जाऊंगा किधर उससे पता नहीं। यहाँ पे मैं गिर कैसे गया यार? मेरे को लगा था कि आगे है ना, आगे इसी तरह का वो बना हुआ है, जमीन है, इधर तो जमीन था ही नहीं। क्या बकचोदी थी लेकिन यार वो। Holy shit! इसी बकचोदी मेरे साथ बार बार क्यों हो रही है लेकिन? अरे नहीं भाई, मेरे को लग रहा है कि मैं दिमागी संतुलन थोड़ा थोड़ा खो रहा हूँ। मैं क्यों खो रहा हूँ? क्योंकि बार बार मैं यहीं पे आ रहा हूँ। तो कोई आसान तरीका जरूर होगा। वहाँ पर मैं गिरा कैसे लेकिन? गिरने वाली जगह भी नहीं थी। भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो क्लाउडी भाई? मैं तो खेल रहा हूँ वो, क्या नाम है, ओनली अप। इतना आवाज कम क्यों आ रहा है आपका? ना कम किए होंगे तो आ रहा है। तुमने कम कर रखा है अपने पास से, बढ़ाओ ना आवाज। अरे तुमने कम किए तो आ रहा है। नहीं मैंने कम नहीं किया है। मेरा आवाज फुल है, देखने दो जरा। अभी ठीक है? अभी ठीक है। और क्लाउडी भाई इतने लेट आ रहे हो आप? हेलो हेलो, ए चिल भाई, व्हाट्सअप। अरे मैं तो बोलता हूँ तुम मेरा आवाज 200% कर दो ना, फिर सही हो जाएगा। अरे नहीं, देखो तुम्हारा माइक का ही प्रॉब्लम है ये। अब मैं माइक का और क्या कर सकता हूँ भाई? देखो अभी आवाज थोड़ा ठीक आ रहा है। और वो हेडफोन ले लिया? नहीं। माउस? माउस ले लिया, कीबोर्ड ले लिया, माउस पैड ले लिया। नाइस। सेम वही 402 ही लिया। हाँ वही अच्छा है मेरा। वेट करा 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 करा, कोई नहीं आया, फिर मैंने तो चलो भाई अकेला खेलते हैं अभी। मैं अकेले खेलने आ गया ये। इसमें पता है इतने ज्यादा बग्स है ना क्लाउडी भाई। नहीं गेम है ना? मतलब भयंकर बग्स है, मतलब बहुत भयंकर है। क्या खेलोगे नहीं वेलो फिर? बताओ खेलना है क्या? आ जाएंगे और क्या। आज फिर ठाकुर भी जल्दी आ रहा है आजकल, मतलब 12:30 तक आया है। हाँ 12:30 जल्दी थोड़ी हुआ यार। अरे 2 बजे से तो जल्दी है ना। ये बात सही वाला।
आ जाओ क्लाउडी भाई, आ जाओ। तो नीचे गिर के तुम बोले अब खेलना ही नहीं है। हाँ नो नो भाई यार इतनी टट्टी गेम है ना यार ये। क्या हो गया भाई एक बार ऊपर चलो 50 बार नीचे गिरो यार। फ्री है क्या गेम? अरे नहीं 350 का यार। अरे 350 रुपया बर्बाद। पूरा पानी में भाई, पानी में भाई। जैसे तुम गिरे तो ऊपर से वैसे तुम्हारा 350 रुपया गिरा। जी यस यस चलो आज वैलोरेंट में मचाते हैं ना थोड़ा सा। स्ट्रीम बंद कर दो ना यहाँ पे। इधर बंद कर देता हूँ। अरे मैं और चलो क्या क्या बोलोगे? मैं रात को जो बोलना आया था तो मेरे मेरी नहीं था, वो मेरा फ्रेंड था। अच्छा मतलब उसको देखना गेम कैसा है। बस समझ गया मैं। और चलो भाई कैसे, क्या हाल चाल है, कहाँ गए वो आजकल? तो कैसा लगा उसको गेम? बोलता एकदम स्ट्रेटेजिक गेम है। मतलब खेल तब मालूम पड़ा कितना स्ट्रेटेजी लगाते लोग। खेलेगा उसके बाद पता चलेगा कि उतना तो टाइम ही नहीं है स्ट्रेटेजी लगाने का। 1 मिनट में राउंड खत्म। कल दोपहर में अच्छे मूड से आऊंगा ये गेम, इसको एक बार में खत्म करूंगा। बस सब बढ़िया। दिसंबर में आ रहे हो ना? क्या कौन सी आईडी से आऊं? कोई सी आईडी से आ जाओ। इनकी उसमें ही टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा जॉब चेंज की क्या? क्या बात है। कैसे चले ताजे दे वो इनको। कहाँ हो तुम? ऑनलाइन दिख ही नहीं रहे हो। अरे मैं तेज भाई की आईडी से आ रहा हूँ ना। अच्छा तेजस, अच्छा ये दूसरा आईडी से तेजस खेल रहा है क्या? खेल देखे तेज भाई कौन तो ही बुला रहे हैं। कीबोर्ड ले गया भाई आप पोकर में। पोकर पे नहीं गया वो चीज खराब हो गए थे और वारंटी में था कीबोर्ड लेकिन डैमेज था, फिर क्या ही करेंगे। तो मतलब कौन सा कीवर्ड लिया है? एंटी स्कोर का MK1000। वो भी मैकेनिकल ही है ना शायद? मैकेनिकल ही है वो। रेड स्विच लेता हूँ मैं ज्यादा, मतलब ब्लू स्विच का ऑप्शन था इसका। हाँ लेकिन इसका कट कट का आवाज जानता नहीं मेरे को पता है। हाँ हाँ वो नॉइजी रहता ना वो। हाँ बहुत मजा। मेरा मेरा है कौन सा पर्पल है शायद, बहुत कम साउंड है इसका। पता नहीं गेम ओवरले चल ही नहीं रहा।
आओ नो भाई। ओ नो भाई। करो स्टार्ट करो। हेलो करो तो फिर स्टार्ट। मैं करो। आओ थोड़ा पीटते पाटते सबको। आयन क्रम्बिट आया 4,500 का। वो मत लो। मैं वैंडल सिर्फ वैंडल लूंगा एक। कौन सी? कोई भी जो आएगी किल इफेक्ट के साथ। ऑप लो ऑप। ऑप यूज करता ही नहीं। अच्छा रुको आज से ऑप यूज करता हूँ मैं। लेकिन एजेंट उसके लिए एजेंट होना चाहिए ऑप यूज करने वाला। या तो फिर मैं स्मोक लेके ऑप के साथ खेलूं पीछे। मैं तो बोलता हूँ नो भाई। मैच नाइफ की सिग्नल नाइफ। वो क्या होता है नाइफ पे उठा नहीं सकता मारने के बाद समझे। सही बोल रहे हैं। तो सही लगता है वो वर्थ लगता है। वो बात तो है कि मैंने लिया नहीं नाइफ। ले आओ। डेडलॉक खोल लिया क्या? हाँ मैंने रेना खोला। मैं रेना खेलूंगा थोड़े दिन बाद। थोड़े दिन बाद क्या आज से खेलो? आज से खेलो क्या? चलो आज से खेलता हूँ। बस ई से हील करना है। नहीं ई से डिसमिस करना है। क्यू से हील करना और कुछ तुमको करना ही नहीं। और सी से फ्लैश करना है। Everything, everybody is afraid of everything. तो कुछ बोलती हो? हाँ डायलॉग उसका अच्छा है। ना मैं माउस पैड ले लिया मैंने 200 वाला पता है। सही बताओ मीडियम लिया क्या? एकदम एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज सही। एकदम स्मूथ है यार ये माउस पैड। मतलब एक्स्ट्रा लार्ज नहीं जब कीबोर्ड आ जाता है पूरा माउस आ जाता है बहुत जगह बचती है मतलब ऐसा मतलब फ्री मूवमेंट। बहुत सही है बहुत सही माउस पैड है। पिछला वाला भी था बड़ा लेकिन इतना बड़ा नहीं था। वो 700 mm का होता ना जो 700 लेंथ क्या होता है उसको मीटर क्या बोलते उसको mm बोलते ना 700 mm का होता ना जो वो लिया था इतनी बार। लेकिन ये 800 mm का है और वो महंगा था यार। वो 500-600 रुपए का था और ये सस्ता है। ऐसा क्यों? क्वालिटी पे है डिपेंड। और क्या क्वालिटी है? कपड़े में क्या क्वालिटी देखोगे? ये भी बात सही है। धो देना जब गंदा होगा तो। मैं तो आता घसता था उसपे। खराब होता था ना मतलब गंदा होता था ना। जाता था कपड़े धोने का साबुन आता ना वो लगाता था। फिर वो जो उससे घिसता ना कपड़ा उससे घिसता था मजबूत एकदम मेल निकलता था। देखता था तो मजा आती। फिर और घिसता था। मैं आज वीसीटी का देख रहा था। वो सेमीफाइनल खड़ा है। वीसीटी पैसिफिक चल रहा है ना अभी। एसेंशियल लीग चल रहा है ना। हाँ एसेंशियल चल रहा होगा। कल फाइनल है। Need a drop. Reloading. Smoke's down. Artilleri's down. Reloading. Spike down A. I got the spike. अरे सही मार रहा भाई।
spotted A. Reloading. One enemy remaining. Forgive me if I don't grieve. If I accept here, it's because I am. A momentary win. Let us make it permanent. Need a drop. Thanks. खेल के ना वनली अब मेरा उंगली दुख गया है तो लेफ्ट राइट कर ही नहीं पा रहा Sound sensor up. Target spotted. Target. Flag it. Out of here. Smoke's down. Reloading. भाई क्या लो अभी तक लो बुलडॉग लो महंगी करें लोड कर ना भाई लोड करना होगा तुमको Knife deployed. Two suppressed. करो फ्लैश Flashbang. Last player standing. बहुत लेट हो गया One enemy remaining. ओह No more doubts. We're ready. Need a drop. Thanks. Don't get rusty. Spike down. C. Got the spike. Barrier deployed. I have the spike. One enemy remaining. Nice. Go and meet your maker. Stay alive. I want their life, not yours. Need a drop. Thanks. Reloading. No prisoners. Suppressing. Bye. My ult's ready. Reloading. Reloading. Kill confirmed. Ult duck ready. One enemy remaining. बंद कर दो Looks like I. दवा बंद कर दारू गेम तो ना Jet, remember to stretch. I don't want you to sprain an ankle at 90 miles an hour. I could use a drop. Thank you. I'll show you, scary omen. I show you जरा ना ओमन ऐसा बोल रहा है Enemy spotted C.
क्या हगा यार मैंने Reloading. Planted. You should run. Last player standing. भाई Activating kill mode. That's a joke. Kill mode is default. Need a drop. Thanks. I will not die today. Launching smoke. Shutting them down. One suppressed. Feeling Away. Enemies. Bad guy down. Reloading. Light planted. Reloading. Flashback. Oh, कसम. Yikes. Last player standing. I've got your trail. Everyone's motor functions okay? I know humans get tired. Need a drop. Thanks. Kill all your opponents. Shutting them down. Enemy spotted A. To disappoint. They will cover. Grenade. Last player standing. Their death demands our attention. Need a drop. Thanks. We survive. Watch this! Suppressing. Give me those back. Two suppressed. Spikes down. एक क्या Spike smoke down. डाल रहा C. है हेलो हेलो हाँ मैं आवाज ही नहीं सुन पा रहा हूँ रुको एक मिनट तुम्हारा आ रहा है. चेक करना दे हेलो बोलो कुछ अब हाँ अभी आ रहा है. हाँ अभी आ रहा है One Spike enemy retrieved. remaining. Blocking sight. Spike planted. Last player standing. भाई
कैसे? Clutch. If I power down, restart me. You leave me for scrap, I'll kill you. चलो ये चलते हैं। अल्ट मारो तुम। You know what to do. Knife deployed. Walks away. Enemy kill. Reloading. Begins. Nice shot, no way. Last player standing. ओह 40 सब लोग पीक करेगा क्या? Bragging rights if you get first pick. टाइट छोड़ के भागे नहीं यार वो लोग। हाँ ना, वो एकदम वहीं बैठे थे भाई। We must adapt. Shutting them down. भाई I've got your trail. Pull them to their grave. Enemy spotted. Got him. Enemy spotted me. Last player standing. अरे यार मेरे गोल One enemy remaining. Shutting them down. Golden 30 seconds left. अबे यार ढूंढ के पूरा आया। आ जाओ तेजस्वी निकालते हैं। अरे Watch and learn. There. There. होली शिट भाई, एक एचपी हूं मैं। गन लो मेरा गन लो, ये लो। Two suppressed. Last player standing. ओह 1 एचपी था मैं। मैं गन मांग रहा, मैं तो 2 गन का पैसा लेगा अभी। Last round before the switch. If you save, spend it. Who needs equipment? मेरा नेट ना नो भाई भाग रहा है पता है। Need a drop. इतने दिनों से वो वैसे चल नहीं रहा है। Suppressing. One suppressed. Stay down. My ult's ready.
Reloading. Cooling down. Reloading. Ultimate ready. Grenade out. Fire in the hole! Last player standing. Spike down A. भाई ओमेन क्या टीवी है भाई? Switching sides. Let's get these idiots. Need a drop. Thanks. Target spotted mid. Headshot. Suppress it. Enemy spotted. One suppressed. Blocking sight. One enemy remaining. 70 के बाहर क्या? Spike down B. There you are. Stay in range of my stim beacon, and we'll mow them down. चलो ये तो अच्छा है जेट खेल रहा है करके. Need a drop. Thanks. I will not be beaten. हाँ अभी आ गया. Net deployed. Enemy spotted mid. Enemy spotted A. Tango down. Spotted mid. He's alright. Last player standing. Spike down mid. क्या तक्की है ना यार ये मैच चलती नहीं. इस सस पे गन ले लेता ना मैं कुछ और. Who am I kidding? My knees are gonna kill after this. Let's go. Launching smoke. Molly. Enemy spotted mid. 68 Omen. Enemy. Still in sight. ठीक घुस गया. Last player standing. Spike planted. Good riddance. I'm amped. Let's go. I got things to do. Need a drop. Thanks. It's down. Guns up. Get deadly. B. Target spotted A.
सब सीजर है। Spike planted. यार क्या एक भी गोली लगी नहीं उसको। One enemy remaining. तो बैकस्टैप लगा नहीं रहा बंदा ये। Enemy spotted C. ये बंदा बैकस्टैप नहीं लगा रहा है, बैकस्टैप करो। नो भाई, ये तो पैकेट उस क्यों आ रहा है यार मेरा? हमारा इंटरनेट टूट रहा है भाई। I will fulfill my purpose. तो मेरी गलती नहीं है ना, ये तो मतलब वाईफाई वालों की है ना, हाँ सर्विस प्रोवाइडर की है ना, तो उसको भेजता हूँ मैं स्क्रीनशॉट, गेम का नहीं। Safety's off. Shutting them down. Launching smoke. Cutting their vision. Grenade out. Cutting their vision. Scratch one. क्या है यार? Last player standing. भाई क्यों? Match point. They don't have a single life worth saving. Need a drop. Let's go. Thanks. Suppressing. Pull them to their grave. Nothing there. There. One less. Fire in the hole! Spike down. C. Last player standing. मार। Attackers win. जेट नहीं निकाला मैच भाई। कहाँ गया आप? कॉम्पी में क्यों दिखा रहा है 3 पे? कौन? हमारी आईडी। क्रिएट पे दिखा रही है तुम्हारी आईडी। अरे क्योंकि मेरा एफ के हो रहा था ना मेरा बार बार, इसलिए अच्छा अच्छा अच्छा। ठाकुर भाई घंटी तो बज रही फोन की, क्या बात है? हाँ पूछो पूछो। अरे घंटी कैसे बज गई? घंटी कैसे बज गई फोन की? तो नरुतो भाई क्या हाल चाल है? वेलकम टू द स्ट्रीम नरुतो भाई। हाँ क्या हुआ, आने नहीं किया तुम आज? हाँ ठीक है, तो नहीं आ रहे ना? देखो देखो मेरा नोवा भाई है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बताता हूँ थोड़ी देर बोले। वॉली अप कल, वॉली अप का स्ट्रीम कल लगातार करेंगे। दोपहर में उठेंगे,
रोएंगे गाएंगे लेकिन पूरा खत्म करेंगे कल। भाई 7 दिन बाद मैं खेल रहा हूँ वैलोरेंट। नाइस नो भाई नाइस। कोई गेम नहीं खेला। क्यों क्या कर रहे थे तेरे दिन में? मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। होता है कभी कभी। मैं तो अच्छा ही खेलूंगा ये। Split. Let's do this. मजा आएगा क्या नारुतो भाई? चलो कल खेलते फिर दोपहर में। आज मैंने कोशिश किया था खेलने का। मैं कहाँ तक पहुँच गया था? मैं पहुँच गया था जो बस वाला स्टेज आता है वहाँ तक पहुँच गया था। अपलोड पैकेट लॉस कुछ भी नहीं है ठीक है? हाँ। लेकिन मेरा डाउनलोड पैकेट लॉस 18.2% है। ओ भाई तेरा इंटरनेट का ही प्रॉब्लम है। बारिश वारिश हुआ है क्या? हाँ बारिश तो रोज हो रहा है। मैं फाइबर लगवा रहा हूँ यार। लगवाओ फाइबर यार। मैं खुद यार चेंज करने वाला हूँ अगस्त में इंटरनेट ये। कब कर रहे हो फिर? अगस्त मिड अगस्त में चेंज करूँगा। मेरा तो ये महीने का रिचार्ज हो गया वरना मैं भी चेंज करूँ। तो मैंने भी 3 महीने का रिचार्ज कर दिया ना इसलिए अगस्त तक झेलना पड़ेगा। अच्छा तेजस भाई नहीं क्लाउडी भाई। नारुतो भाई बोल रहे हैं कि गाना गाओ तुम। कौन? सुपर चैट करने बोलो पहले। सुपर चैट? हाँ सुपर चैट का तो ऑप्शन ही नहीं है यार। तो गूगल पे का नंबर दे दो। गूगल पे का नंबर दे दो फिर मैं गाना गाऊंगा एकदम बढ़िया वाला। हाँ सुन के उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या। और क्या क्या खड़ा करना है वैसे? नारुतो भाई को पूछ लो। नारुतो भाई को पूछ लो ना भाई कि क्या क्या का मन है। वही हिसाब से गा देंगे। हाँ I like flowers and stuff, but this place no get flavor. No gold. Where's the size? The bling blings. Come on. Reloading. Reloading. बहुत जल्दी बफ आने वाला है इसका। Reloading. किसका? डेडलॉक का? हाँ। अच्छा एजेंट है क्या? नहीं बफ आने वाला है। बहुत वीक है। बहुत वीक है एजेंट। बहुत वीक है। पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? Mag deployed. One suppressed. Reloading. Reloading. वेट कर रहा हूँ। Over there. Oh. Spike down A. Left side. Sound sensor up. I have the spike. उधर ही रेस। 10 seconds left. Listening. Cover, cover, cover. Last player standing. Spike planted.
से प्लान करना चाहिए मुझे। पता भी नहीं था ना। लगा था रेस जगह पीछे हो इससे अच्छा 2 आइस बस्ट फुका। I'll shut them down. Until then, survive. क्या सुपर चैट किया क्या? नहीं किया। अरे कर दो भाई। पैसे से अच्छा है कि 2 आइस बस्ट फुका दो उनको। Bring your best. क्या दो? आइस बस्ट फुका दो। Shutting them down. मेरी आवाज नशे से कम है क्या? Reloading. Reloading for you. Still in sight. Wonderful. Obscuring vision. Clean kill. Enemy spotted. Blocking movement. Planted. Shutting them down. 2 suppressed. Last player standing. नो पे 100 है ये। One enemy remaining. करना पड़ेगा। कर लिया क्या? आराम से नो भाई। Nice one. I bet you never seen a can opener do that. Can opener अपने आप को बोल रहा है। Technology at its finest. Well done, KO. Wonderful. Reloading. Wonderful. I'm rotating. Hello. Hello. वाईफाई वाले को ना परेशान कर दूंगा ना भाई। सोच के रखा हूँ मैं। मार के धुआं बना देना। मेरे को लगता है ना भाई, मेरे को लगता है ना Push through any doubt. जब से मैं आया हूँ ना हाँ तब से कोई मतलब कोई कुछ बोल रहा है और ऐसा कुछ बोलता नहीं होगा कोई, किसी को कुछ पड़ी नहीं होगी। मतलब जो सब सर्विस है Cutting their vision. Enemy spotted. My ult's ready. Walks away. I need healing. Reset. तेज और Last player standing. भाई ऑल्ट सब मैंने मारा लेकिन कुछ नहीं। घुस कैसे गए तुम ये बताओ। Attack when they're suppressed. घुस के मैं आराम से अंदर घुसा मारते हुए। They make mistakes. नो इस बार डीप चाकू मारा यहाँ पे। Over there. एंट्री में मत मारो। Knife deployed. इधर ही मारने मिला था ना। डीप बोला था डीप। Reloading. Rotating. Reloading. भाई Going B. तो जाना। Going B. Here. Yes. Yes. पाया क्या? Fragment. Barriers destroyed. Concealment. Reloading. My ult's ready. Let's fight. 30 seconds left. Reloading. Light planted.
player standing. पीछे क्लाउडी भाई को पूछो कौन सा ब्रांड है उनका। अरे 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 क्लाउडी भाई ब्रांड पूछ रहा है अनिरुद्ध भाई। Their life, not yours. Yes, need a drop. Thank you. Reloading. It begins. कीपैड मारेगा चोंग। चलो अभी चलो अभी नो खेलने का मौका ही नहीं मिला। पता मेरे पैकेट में इसका खत्म आ गया ना। Enemy spotted. A. Still in sight. Reloading. Reloading. Prepare for hellfire! It's a kindness. Fire in the hole! I know exactly. Player standing. Spike down A. Look your enemy in the eye. It helps with a क्या हो रहा है ये? Reloading. Cut them down. Still in sight. Concealment! The rush. Obscuring vision! You will not kill my allies. Reloading. Over there. Suppressing. One suppressed. The hunt begins. Grenade. Last player standing. 120. Spike down B. One less. Hold them to their grave! ओह सब तीनों उधर ही थे यार। क्या आता है लेकिन अल्ट पे। क्लाउडी भाई पुणे से Combat is मुंबई a से। means to an end. And we are the means. Negative. 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 Hello. Need a drop. ये बफ आना चाहिए। Hello. 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 एक बार में 2-3 जो भरेंगे ना अल्ट में हाँ तभी 2 तो एटलीस्ट बढ़ना चाहिए। Shut them down. Reloading. Target spotted. A. Going A. No. Yes. Wonderful. Reloading. Blocking this, blocking vision. Reloading. Reloading. Light planted. Satisfying. Target dead. One enemy remaining. Reloading. We
We have come back from wars. Let's go. No. Reloading. मराठी आती होगी ना? हाँ आती है ना। क्लाउडियो भाई मराठी आती है ना आपको? क्या? ओ क्लाउडियो भाई मराठी आती है? मराठी बोलने नहीं आती, समझ में आती। I will not die today. Over there. No. My ult's ready. अभी नहीं स्मोक नहीं। करो Obscuring vision. You disappoint me. Blocking movement. You fought well. Spike planted. अरे यार पीछे देख नहीं वाला था कि मैं आगे जाऊँ भाई ये। One enemy remaining. Enemy such a speed. Survivors rest. I'll clean up. मेरा पैकेट तो जरा ना होना भाई तो कि मैं तोड़ दूँ मैं लोग को, लेकिन We fight once again. No. मैं पैकेट पे पिक देता हूँ उसके बाद वापस पिक देता हूँ, मेरा वैसा होता है ना। ऐसा पिक देता हूँ फिर उसके बाद वापस मेरा पिक आ जाता है। एक बार रीस्टार्ट कर लेना ना। अरे रीस्टार्ट अब भी किया था मैंने। गेम अनइंस्टॉल करना नहीं यार, लेकिन मैं वेबसाइट पे भी चेक कर रहा हूँ दूसरी packet.com पे। वहाँ पे भी आ ही रहा है मेरा पैकेट। Reloading. Going A. Rotating. कुछ वहाँ पे साउंड दिया नहीं, कुछ किया नहीं और रोटेटिंग तू भी किया नहीं। Concealment. We turn to dust. Knife deployed. Thirty seconds left. One enemy remaining. Last player standing. I call you Chale because it means you're my friend. But maybe I should call you Kwasia because Yes. you follow. Yes. Yes. My ultimate is ready. Reloading. Hello. Hello. Don't worry. Hello. I'll keep them quiet. Reloading. Well divided. हाँ वो इधर ना करो। In sight. What's the price? In sight. Prepare for hellfire. Reloading. Problem solved. Target spot. Love this fight. Wall raised. Plant the spike. Blocking vision. Concealment. Your duty. Fire in the hole.
Last player standing. Flashbang. अबे यार They think themselves are equals. They are mistaken. Reloading. 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 Thank you. Yes. Reloading. Reloading. Thank you. Thank you. Cutting their vision. Shutting them down. Fall back. Blocking vision. Blocks away. Reloading. Reloading. Obscuring vision. तुम मरने वाले हो। Reloading. I know exactly where you. पता ना भाई तुम मरने वाले हो। लेकिन ऊपर से एंगल कैसे दिख रहा था? Remove. कॉल करके दे देना। One enemy remaining. Enemy was मेरा शायद गन दिख रहा होगा उनको, है ना? अरे वो एंगल छुट्टी है तो एंगल में। Last round in the half. To your pockets, fools. Yes. Thank you. Weapon here. Weapon here. Ut på tur. Need a drop. Reloading. Reloading. नाइफ क्यों हो भाई तुमने? करूं? करके देखो। Net deployed. One suppressed. पास में ही है। बैठा है ये। भाई इतना पास में मार किया। Reloading. Cutting their vision. Still in sight. Here. Barrier deployed. You're not. Spike 30 seconds left. Spike down. Defender spawn. I have the spike. Oh, 80 assists. You will not kill my allies. Pull them to their grave. Nothing there. Throwing net. No surprises. One enemy remaining. They were not good enough. Wonderful. Reloading. Switching sides. I'll survive a dent or two. Can't say the same for you fragile humans.
अबे क्या हेलो 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 Reloading. Hello. Reloading. Yes. अबे तुम क्या कर रहे हो? Reloading. क्या टर्न जाओगे वहाँ पे मेरे उससे? टर्न हो जाऊंगा क्या? Over there. Going A. Fall back. Fall back. Healing you. Enemy spotted A. Shutting them down. Spike planted. Here. Imposter killed. Enemy spotted A. One enemy remaining. Det var nära på. All is well. Oh! Let's make a plan, then execute. No. 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 Wonderful. Hello. Hello. I'm rotating. Hello. Still in sight. Suppressing. Enemy spotted me. Two suppressed. भाई क्यों गया मैं अंदर Wonderful. के पास गया क्यों Obscuring मैं? vision. Yes. No. Mitt i smörja. Spike planted. Wonderful. Sound sensor up. One enemy remaining. Sensor tripped. नाइस रे Reloading. Hello. Bragging rights if you get first pick. Hello. गोश्त तो ना बहुत गंदा है मिलता है पता है Hello. Hello. Going A. No. Going A. No. Yes. Impressive. Thank you. टेबल सबसे नीचे पहुंच गया ना Impressive. Map deployed. No. Sensor drift. अरे यार so nice I know exactly where you are. Spike planted. हवा में मार दिया मेरे को नोवा भाई उसने फायदा क्या है मेरा Grenade out. Wonderful. Suppressing. Last player standing. क्या सही सिंक पे पिंक किया भाई I will fulfill my purpose. Hello. Hello. एक गन निकाल मेरे को 15 बार तो एक गन निकाल रहा है मेरा कल ये वाईफाई वाला सुनने वाला कुछ चलता मेरे मुंह से मेरे साथ में सेम ही हाल हो रहा था ना कुछ दिन पहले दिमाग खराब हो गया बहुत गंदा सुनने वाला है वो मेरे मुंह से
Let's get this done. Going A. Wonderful. Going A. Yes. Knife deployed. Spike planted. The hunt begins. Hostile down. Ultimate ready. Pull them to their grave. Reeling them in. Last player standing. कहाँ देख रहे थे तुम? अरे मैं रेस पे शिफ्ट कर गया ना तुरंत. Even with numbers, anything can still happen. Yes. राइट साइड में शिफ्ट कर गया ना तुरंत मैंने. राइट साइड पे? हाँ जिधर तू पुल गया था ना. उधर क्यों देख रहे थे लेकिन? उधर ही शिफ्ट हो गया मेरा. इधर मेन पे देखना तुमको सीधा मतलब. Reloading. Rise and bring glory. Going A. Need help. Need help. Need help. Shutting them down. Going A. I'm rotating. Hello. My ult's not ready. ये जाओ क्या? Barrier created. Help. Rotating. सब बी पे आया है यार. सब बी पे खेल रहे हैं चोमो के साथ. अबे यार. एक घुस गया सर. Spike planted. यार सब छोड़ के क्यों आ रहे हो? Player standing. You're all more important than words on a brief. Look out for each other. I'm saving. Wonderful. I'm rotating. Hello. 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 Kill all your opponents. Here. Impressive. Yes. Over there. Well divided. Yes. Yes. Fire in the hole! No. Wonderful. Wonderful. Sensor tripped. Wonderful. Multiple targets B. Spike down B. Wonderful. Suppressing. One enemy remaining. Four down. One suppressed. There. Reloading. ओ बा. मारना मेरे शॉट में से पता तुमको? If I power down, restart me. You leave for scrap. I'll kill you. क्या शॉटगन से मेरा मारा हो तुमको पता है भाई? एकदम खतरनाक.
Suppressing. Concealment. You will not kill my allies. Target spotted A. Kill confirmed. Hold them to their grave. I know exactly where you are. और छोड़ा उसको। अरे नोवा भाई मालूम पड़ गया तुम्हारा उन लोग को? पता है क्या? नहीं भाग जाओ वापस। Spike planted. नोवा भाई तुम्हारी नाइफ है और उस पे आल चढ़ी के करने नहीं देना। One suppressed. जल्दी जो भी करना है जल्दी जल्दी करो भाई उस पे आल्ट भी है यार तुम्हारे पे टाइम नहीं है इतना One enemy remaining. Prepare for hellfire. अंदर ही साइड पे है Reloading. सही सीन था लेकिन I detonate. You don't. मुझे पता था इसको आपकी बात बचाने के लिए ना लोग मगजमारी करेंगे और जो उसको बचाने की कोशिश करेगा मैं उसको मारूंगा सेज ने उसको बचाने की कोशिश की उसको बचा भी ली लेकिन मैंने उसको मार दिया मैंने सेज को मार दिया बोला अगली बार से हिम्मत नहीं होनी चाहिए बचाने की जो बचाएगा उसको मारूंगा भले बाद में मर जाऊं I am with you. We are strong. Shutting them down. One suppressed. अरे यार ये चले जाओ यार Obscuring vision. सब ऐसे भाग के आ रखे हैं Enemy spotted. My ult's ready. No one walks away. Enemy spotted. Headshot. No escape. जाओ Your duty is not over. My ancestors say what's up. 30 seconds left. नॉइज आ रहा है माइक से Hello. माइक से बहुत गंदा नॉइज आ रहा है किसके माइक से नॉइज आ रहा है तेरे One enemy remaining. ऐसा कैसे नॉइज आ रहा है Spike planted. Enemy spotted A. रुको ये उनके बाद देखता हूँ काय की नॉइज आ रही है पता नहीं हवा घर 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 अभी भी आ रही है अब जा रही है अब आ रही नहीं है आ रही अब तो मस्त है Wonderful. Wonderful. Yes. The enemy only looks composed. Their hearts tell a different story. Hello. Yes. Hello. Hello. Mag deployed. One suppressed. कर रहा हूँ Cutting the ring. I'm sorry. There. Yes. Here. Shutting them down. 3 suppressed.
ओ मिड से आ रहा 34 एसिस। Last player standing. 30 seconds left. Spike planted. भाई ये सब साइड में घुस जा रहे हैं एक साथ भाई, कैसे चलेगा ऐसे? यार ये इतने बंदे ना बहुत जल्दी रोटेट दे देना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ए बी से पूरा निकल के फिर मैं मिड गया देखने। Can someone get this? Need a drop. सरप्राइज हो क्या लोग को? Follow protocol. Thank you. Suppress it. Target spotted me. One suppressed. Thank you. Thank you. I'm target spotted B. One enemy remaining. लेफ्ट में Spike down B. बोल रहा हूँ लेफ्ट में तो। और सुनना नो भाई तुम आराम से जाओ। ऑफ लो अंदर से। Wonderful. ऑफ लेना मेरी ऑफ लेना। Match point. अबे नहीं ले पाया। चलो कोई ना उठाया था मैंने। मेरे से मांग लो। I could use a drop. Thank you. बड़ा सरप्राइज देता हूँ लोगों को। तो टाइम से कोई पिक नहीं दे रहा था ना वहाँ पे। मतलब पिक देके Yes. थोड़ा लड़का We go. वो चेंज करता हूँ, क्या बोलते हैं उसको? Yes. Suppress it. Two suppressed. Enemy spotted me. नहीं स्मोक कर दे। Enemies nearby. I need healing. Reloading. Reloading. Fire in the hole. Spike planted. Concat pulling them in. Pull them. Reeling them in. One enemy remaining. आराम से डिफ्यूज कर। पीछे से आएगा ये? नहीं मैंने इसको ऑल कर दिया था ना। Defenders win. देखो स्टेज वापस उसको पता नहीं गया, वो वापस से मर गया। स्टेज काफी दुनियादारी दुखी है दुनिया में आए। दुनिया की मदद करने चला है, खुद की तो बचा पहले। तो मैं रिस्टार्ट मार के आता है, शायद रिस्टार्ट मारने से हो जाए ना। ठीक है। Dead man dearest. डेविन कहाँ चला गया भाई? डेविन है ना, आएगा ना। नहीं आया तो हूँ मैं कैप्टन में नहीं है इधर, डिस्कॉर्ड पे उनको बुला। अबे जब मेरा 98 भाई आरआर प्लस था भाई, तो बस रैंक अप मैच में ऐसा होता है मेरे साथ हर बार। क्या हो गया? आरएनजी चाहिए, क्या हो गया क्या नहीं? हाँ तो मिल जाएगी भाई। मैं लगा रहा हूँ भाई, मेरे को जो गन खेलनी है भाई, मैं किसी के लिए कोई गन नहीं लगा रहा, सीधी बात है भाई। हम बोलेंगे वो लगाना पड़ेगी ना, हमारी पार्टी में ना। स्ट्रीम है तो फिर म्यूट कर दो। अरे इनको डिस्कॉर्ड में डीएम करता हूँ। नहीं खेलूंगा। एक मिनट, इनको डिस्कॉर्ड सर्वर पे डीएम करता हूँ। अरे वो है भाई आ गया मैं उसमें 343 लेवल पे है भाई। अच्छा सीरियसली। अरे बंटी आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी। अबे तो ये जैकी म्यूजिक किसने लाया भाई? कौन गाने चला रहा है? मैं चला रहा हूँ। क्या हुआ, नहीं चलाने हैं? हाँ सुनाई दी बोलेगा
तुम रहने, अरे तो आवाज बढ़ा लो भाई उसकी। कम फ्रॉम लास्ट गेम गॉड गेम। तो म्यूट कर दिया था फिर। अभी किया भाई। गुड गेम प्ले, थैंक यू ब्रो। चलो यार तेजस लगाओ यार गेमिंग मैच। एक बज रहा है ना। अच्छा अनरेटेड ही खेल। अनरेटेड नहीं खेलेंगे भाई। खेलेंगे तो कॉम्पी भाई, कैप्टन भाई तो कॉम्पी के लिए आते, पहले बता रहा हूँ भाई मैं। हाँ भाई। पहुंच गया ये। फाक यू ब्रदर, फाक यू। अरे नहीं, ये तो कोई बात नहीं है यार। बेबी देखो वहां तक तो मेरे को गेम रट गई है पूरी। एक बार गेम खत्म हो जाए ना भैंचोद, उसके बाद तो मैं इसको कुत्ता ना बनाया ना मैंने भी। हमारा नाम भी भाई जल्दी थलबान है। अरे माँ कसम। लाइफ को आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल। फिर आ रहा है नॉइस। हाँ नॉइस आ रहा था। अब टिक करता हूँ यार। अरे मैंने कूलर लगाया हुआ ना पीछे, मेरा फैन थोड़ा वो हो गया है ना। अंदर से अभी ठीक करके देता हूँ भाई, तुम टट्टी पूरी कोशिश लगाते हुए। अभी ठीक करके देता हूँ अभी। बस हो गया ठीक। आओ इग्नोर इग्नोर इग्नोर। आ जाओ। लगाओ। लगाओ यार ना भाई, लगाओ ना, क्या कर रहे हो यार? तुम बार बार मुझे देते रहो लगाने के लिए। Match found. Let's do this. जेट खेल रहा है यार। ले लो। अब लग नहीं रहा है कि हम लोग खेल पाएंगे यश भाई के साथ वैलोरेंट। यश भाई तो 52 की लड़की के चक्कर में फंस गए ना। हाँ और वो बावली 52 की लड़की को कुछ पता नहीं है। 52 की लड़की के चक्कर में 4 लोग वेट करते रहते हैं।
भाई डॉज कर गया वो। बताओ ऐसा नहीं डॉज करे। Match found. रेना कोई नहीं लूंगा तो मैं लूंगा। ले लो ले लो। लोटस है। ठंडी। They have no idea how heartless I am. इस मैच के बाद जाऊंगा भाई कलौरी भाई। हाँ हाँ मैं क्या बोल रहा था, कल संडे, कल थोड़ा जल्दी आओगे? आ जाएंगे कल दोपहर में। अरे हाँ आ जाएंगे। हाँ मैसेज करना है ना। हाँ दोपहर में मुश्किल है यार। 9 बजे मेरी बंदी ने मेरे को पहले ही धमकी दे दी है। बोलती है कि कल दोपहर में रेडी रहना। मतलब क्यों बोलती रेडी रहना बस। मेरा कह रहे कि क्यू से क्या होता है, हील करता है, और ई से क्या करता है, डिसमिस करता है। डिसमिस डिसमिस मतलब गायब होता ना, शूं करके इनविजिबल हो जाती है। इनविजिबल नहीं, वो लगती नहीं गोलियां उसको। अच्छा Target spotted C. Multiple targets B. Nice. Enemy B. Someone's there. Spike spotted C. One enemy remaining. Go and meet your maker. Momentary win. Let us make it permanent. काश वो तो कहाँ जा रहे घूमने? अरे घूमने नहीं जा रहे। अभी उसने मेरे को बोली बस रेडी रहना। मतलब ठीक है, वो जा बोल सकता हूँ। मैं बोला बाइक का पेट्रोल भरा देना। ये प्लस साइन बना हुआ है, वो अल्ट थ्रो करने से क्या होता है? No prisoners. क्या? अच्छा ये दो तरह का थ्रो कर सकते हैं। Target spotted C. Enemy spotted A. Multiple targets A. Spike down A. One enemy remaining. Flawless. Ah, meus amores, we live another day. We do what we do. Get back to chilling. तेरे अश्कों से मुझ पर
असर अब नहीं होता ये बात जान ले पत्थर दिल नहीं होता Grenade! Target spotted C. Multiple targets C. Cutting their vision. Target there. Alvida. Spike planted. Target C. Still in sight. Last player अबे इधर standing. बैठा है भाई। One enemy remaining. Ultimate ready. Blocking fire. It could go either way. अबे क्या कर रहा है ये? We are too damn good at this. नीचे ही बैठा था मेरे इस तरफ बॉल थी सेज की Funnel them to me. Multiple targets C. %, यार क्या भाई मारा मेरे को 40%, 50%, 60%. Last player standing. Spike planted. कल 9 बजे देखो बचने नहीं वाला बंदा वो ये महीने का उसको वाईफाई का रिचार्ज दूंगा नहीं मैं नहीं दूंगा जा क्या क्या कर लेगा कार्ड देगा कार्ड दे मैं चाहता हूँ तू कार्ड दे मैं चाहता हूँ ये कार्ड दे ताकि मैं दूसरा भरा दूँ दूसरे जगह से कर लूँ Hologram. Make them regret their choice of profession. Need a drop. Can I get a drop? Speak up if you need a gun. Speak up if you need a gun. Wave crashing. Enemy spotted A. Over there. Here comes the party. Over there. Joke's over. You're dead. Bring for me. Target spotted A. One enemy remaining. Flawless. Reloading. Miserable cartoons. Reloading. Reloading. The sun is so bright. Don't worry, I'll kill him. आज एक भी किल नहीं होने वाला लग रहा है Bring your best.
No escape. My territory, my rules! Spike planted. Last player standing. ओह कब सीखूंगा मैं ब्लाइंड करना. Hey, little man, pump us up. Let's hear it. बहुत गंदा प्ले किया है तेरा. Sage's walls are coming down. ओह 40 है. कॉमन. C. Dizzy's up. Dizzy has targets. Spike planted. Stay down. One enemy remaining. Over there. Shame. Reloading. We're here because we're the best. Don't any of you forget that. ये हील और डिसमिस एक ही बार यूज कर सकते हैं. हाँ. तो मतलब दो है, दोनों बार तुम दोनों यूज कर लो या तो दोनों बार तुम समझ रहे हो, एक एक करके यूज करो. फिर तुम्हारे ऊपर है जो सिचुएशन के ऊपर रहा. अगर तुमको लगता है कि वहाँ से डिफेंस करने के लिए डिफेंस करेगा. Pull them to their grave. Enemies A. Reeling them in. Spike down A. Someone's in attacker spawn. One enemy remaining. Flawless. फाइकर को ही उठा लिया. Reloading. So, do we mix it up? Double down? Let's talk. फाइकर को ही उठा लिया. सुनो भाई. अल्ट से ओमन से स्पाइक था, उसी को उठा लिया अल्ट से. सब तोड़ने की कोशिश कर रहे हो. I will not die today. Walls up. My ult's ready. Too slow. There. You will not kill my allies. Sensor destroyed. One less. Last player standing. करना था. पास करना. Spike planted. One enemy remaining. अरे भाई इतना टाइम नहीं तेरे पास के एंगल चेक करे जा. लोग समझते नहीं गेम को. मतलब पता है
तो पूरा घूम कर ऊपर चला गया। जरा सा भी गेम सेंस नहीं लोगों को। None of my stuff has malfunctioned yet. Can we celebrate that? We win, we survive. Multiple enemies A. Joke's over! You're dead! One enemy remaining. Spike down A. Flawless. Let them run. Let's reset. Deep breaths and all that. करना वाल में ब्लाइंड करूंगा, ठीक है? हाँ बोल करो, बताओ। अरे जब मरा था उस समय ना, उसी तरह। Water rising. Cutting their vision. Stealing sight. Ultimate ready. Satchel out. Spike down, attacker spawn. Nothing there. One enemy remaining. भाई Last round before the switch. Spend those creds before we lose them. No escape. The hunt begins. Enemy C. Somebody's there. Cutting their vision. Spike planted. Oh, God. Scatter. They will cover. Not a flash. Dizzy's up top. Dizzy has target. Last player standing. क्या कर रहा हूँ मैं तुम? One enemy remaining. दबाओ फट से। Don't rush me. ओ बहुत मारा था, 108 था। एक किल ई, फट से दबाना तुमको आल्ट में इसके। रुकना नहीं है तुमको, फट से दबा देना है। Okay, I only have like 78 फिर भी आल्ट इसका है सेक्सी। अरे तुम गेम का सबसे घटिया आल्ट है वो। सेम चीज तुम बिगर आल्ट के भी कर सकते हो। क्या फायदा अगर बंदा नहीं मरा? बस ये है कि फ्लोट करता है ये। फ्लोट क्यों करती है वो? अरे वो जब खींचते हैं ना, बस इतना है कि वो अपना हील कर लेती है अल्ट में। हाँ उनको डिस्कस करना है बस, लेकिन सबसे घटिया अल्ट है उस गेम की। कुछ फायदा बताओ, क्या फायदा है उसका? क्या तुमसे किल नहीं हुआ तो क्या करोगे बताओ? क्या नहीं होगा? किल नहीं हुआ तुमसे तो क्या जो मार रहा है उसी का कर लूंगा, खींच लूंगा। नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है। Last player standing. अंदर बैठा भाई ये तो।
अब मेरे पीछे आए मर गए हैं। Deep breaths, everyone. Your hearts are pounding. तुम्हारा टीममेट मारने के बाद तुमको थोड़ी ना मिलता है। तो तुमने अगर डैमेज दिया है या गोली चलाई है एक दो और तुम्हारा टीममेट मारता तो असिस्ट का मिलता है, वरना तुम कुछ करोगे नहीं और तुमको ना मिलने वाला है। ये क्या बात हुई? देखो तो लगा अपोनेंट मरना चाहिए बस। Make it happen. Target C. Reloading. Plant the spike, Wings. Spike sticking. Thanks, little man. Enemy B. Problem solved. Enemy B. हिल करो। Last player standing. हिल करा था तुम उसको मार के। अबे यार मैं बिल्कुल दिमाग में नहीं था। वो हील चला गया भाई। हाथ से ही दबाने का उसमें रुके रहेगा तुम्हारे लिए। हाँ ना। That's true. Good advice. Reloading. There. I need to blow something up. क्या उन लोगों का भाई? क्या? वो लोग कहाँ जा रहे हैं? Oh my god यार। Go get him. Folded. Dizzy's up. The man's gonna plant spike. Phoenix है। Spike plant. Enemy thanks, Wings. Crash is ready. और It's all you, little homie. Last player standing. ओहो। जल्दी लोग प्लान करते, पुश करते, मरते। नो भाई तुम मत करो, तुम ड्यूटी पे जाओ। नहीं मैं कुछ हो रहा हूँ। There's no need for the enemy to suffer. Kill them fast. हमारे लिए फ्लैशेस है, एंट्री दिलाओ जाओ। चलो। There. See you on the other side. Satchel out. Balls up. Reloading. Spike stick. Flooding them. No hold them. Sensor tripped. Nothing there. Ultimate ready. Last player standing. ये अपने बंदे का One enemy remaining. Clutch. तो एक बार तो
I know अपने how बंदे to को ये fend for myself. खींच रहा था भाई हल्ड में Your mind is just as dangerous as your weapon. Use Need a drop. Need a drop. अबे डेडलॉक दे दे Stay in the moment. The hunt begins. Somebody's there. Still in sight. भाई क्या रिलोड कर रहा हूँ मैं अंदर घुस के भाई You will not kill my allies! Enemy seen. Kill confirmed. Cállate. Let's serve the die. Got the spike, Wings. Blocking movement. Spike planted. Thanks, Wings. Got 3. Oh, nice. One enemy remaining. Cálmate, hotshot. If they mess with one of us, they mess with all of us. Need a drop. Need a drop. Thank you. Can I get a drop? Let's start this party. तुम्हारा ट्रेड मैंने क्या लिया ना तुमको पता है कुछ Grenade! Get it. Wingman's gonna plant spike. Joke's over! You're dead! Nice dick. Thanks, little man. Last player standing. भाई एंट्री दिला रहा हूँ फिर भी भाई तुम लोग साइड तो कवर करो पहले साइड क्लियर नहीं करो प्लान कर रहे हो पूरा अरे भाई रहने दे मैसेज कुछ क्लियर नहीं था सब बंदे इधर ही मरे हो इधर ही बाहर ही मर गए उसमें कौन है कौन नहीं बस गीको को लेके स्पाइक लेके चले जाओ छोड़ देता अपने उसको कि जा प्लान कर ले कौन सा एजेंट है तेरे पास पोस्ट खेलने के लिए और कहां चलो मैं यहाँ पोस्ट नहीं तो प्लान कर डालते लोग कुछ क्लियर वेयर करते नहीं है बस प्लान कर देते भाई हाँ वो देख रहा गीको को भी वही किया ना मैं अंदर घुस के क्लियर कर रहा हूँ अकेले ये लोग बाहर बैठे हैं आराम से तो वही तो प्रॉब्लम है तो बोलेगा हावर किधर है Somebody out. Bloody them! Here comes the party. Wingman's planting. Enemy A. My territory, my throat. Last player standing. मेरा पैकेट तो खतरनाक होना है बता तुमको कुछ क्या पैकेट तो बहुत मेरे खतरनाक सामने हो ही गया थे मेरे सामने ही थे तुम यार देखो वापिस से कितने जल्दी उसने प्लान किया स्पाइक लो उसने You're all more important than words on a brief. Look out for each other.
स्पाइक लो उससे प्लांट दे देना भाई मत कर तो प्लांट मत कर तो जल्दी तू तो कर भी नहीं रहा है उसको भेज दे रहा है बस प्लांट कर दे जा कुछ क्लियर नहीं है बंदे कहाँ है पता नहीं कहाँ नहीं बस प्लांट कर दो जाओ Target spotted C. Target A. The hunt begins. I hear you. I catch you. Cutting their vision. Last player standing. Spike down. C. अरे मेरे दोनों तरफ था बंदा भाई देख कभी नहीं होता One enemy remaining. ये अंदर ही कैंप कर रहा मेरे को स्पाइक दो बहुत खाई है बहुत ज्यादा खाई है Anyone have any साइड लेने की बहुत ज्यादा खाई है jabbed my fingers. Multiple fingers. ऐसा नहीं होता यार Over there. Hey, keep at it. Reloading. Cutting their vision. Barrier deployed. 90 assists Sound sensor out. Sound sensor out. Ultimate ready. Let's turn the tide. Throwing net. Shield going out. One enemy remaining. Last player standing. मैं लगा ही था प्लेयर लगा ही थे No surprise. अल्ट कर दे बताएं क्या कर रहे हैं मेरे को समझता नहीं वो बंदे लोग थे जो They वर्ल्ड think में अल्ट बचाते themselves हैं are equals. They are mistaken. मतलब चलो ठीक है ब्रीच की अल्ट हुई Can I get a या drop? ऐसा कोई ऐसा एजेंट है जिसकी अल्ट से गेम मतलब बोलते ना एक राउंड चेंज हो सकता है केजे अल्ट हो गई ये सब बंदों की अल्ट ठीक है समझता है वो मतलब बचाने की लेकिन इसकी अल्ट ऐसे भी एक ही बंदा आएगा अल्ट में उसके एक ही टंडा आने वाला है उसके अल्ट में Over there. तो कर देना एक ही बंदे पे गन नहीं लिया Target spotted B. वो कर रहा हूँ वॉक कर रहा हूँ तो वो रन कर रहा हूँ Reloading. Phoenix killed. ये नहीं करना था तुमको पानी कर लिया तो उसका लिया Our spikes down. Spike down. C. Insect. My ult ready. अरे अभी क्यों कर रहे हो जबरदस्ती मैं भाई जबरदस्ती कर लिया ना अभी तुम्हारे पास बचा नहीं देखो Last player standing. अल्ट करो अभी 3 seconds. They will cover. I have the spike. हमें reload. गन खाया करो Seriously? कैसी इसमें गन खाया करो सकते हैं Their स्पाइक में death लूंगा demands our स्पाइक में attention. लूंगा भाड़ में चलो कहाँ जाएंगे उसका उल्टा जाके मैं प्लान करूंगा क्लियर करके साइड मरेंगे इनका गन लूंगा मैं
Right there. Our spike's down. Spike down A. 3 लोग हैं यहाँ पे. Enemy spotted A. Enemy A. Joke's over! You're dead! Crash got a hit. I'll take it. Pull them to their grave. Last player standing. Reeling them in. Your story ends here. डेडलॉक वर्सेस डेडलॉक हो गया ये तो. शिफ्ट बटन छोड़ते हैं. Match point. जो टाइम पे पकड़ना चाहिए वो टाइम पे पकड़ते ही हैं, जो टाइम पे छोड़ना. I'll lead. Let's flush them out. The hunt begins. तू ये गन ले. मेरे को दे. अबे गधेरे दोनों गए. Target C. Rena आई. Confidence आ रहा है. Last player standing. क्या बकवास. Defenders win. My rules. You will not kill my ally. 3-4 राउंड अपने बंदे के वैसे गए, बस लोग साइड क्लियर नहीं कर रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं. बंदे कहाँ है देखो जरा, साइड कंट्रोल लो. अपने पे केजे होता, चीजें होती तो अपन क्या पोस्ट प्लान खेलते. कल आता हूँ ना, कल जब भी आना ना मेरे को बताना. ठीक है. ओके. चलो भाई लोग, इसके साथ आज का स्ट्रीम बंद करते हैं. कल मुलाकात होगी, कल संडे दोपहर में स्ट्रीम करने की कोशिश करेंगे. तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा. गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.